जी सर, बात हुई सर, वो आ गए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नहीं, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स। और सब शुरू कर लें? निशांत जी, निशांत हाँ, शुरू करो, यूट्यूब ऑन हो गया। ठीक है। निशांत जी, हाँ जी, वीडियो ऑन कर लीजिए, वीडियो ऑन कर लीजिए। वेलकम निशांत जी। भैया, हम तीनों में आप ज्यादा हैंडसम हो भैया। देखो, हम तीनों में आप ज्यादा हैंडसम हो। सेकंड नंबर पे गौर साहब, थर्ड नंबर मेरे में जितना। ऐसा कुछ नहीं है। So welcome Nishant ji to this program of Knowledge Tree, and we have launched this series from today. And today you are here to discuss international taxation. So all the participants are welcome to this program in this new series. Today we have with us P. Nishant Gupta ji. He's a wonderful speaker. He's from PwC. He's a wonderful speaker on international taxation. Today he's going to discuss some of the leading case laws and decipher what is inbuilt in therein. So we'll be grateful to him that he is going to decipher such intricate issues involved in the case laws. So I request K. Nishantji to please proceed with this topic. Sure. Thank you, Gaur sir, and thank you, C. N. Nitin ji. Welcome, everyone. Myself, I'm C. N. Nishant, and I've been given this opportunity to share some of my thoughts on this topic of recent development in international taxation. And I humbly thank C. N. Nitin ji for giving me this opportunity and allowing me to share this stage for this august audience. So I'm just sharing my screen. Let us start off with the presentation. Is my screen visible to everyone? Yeah. Thank you. It's quite visible. So, sorry? It is visible very well. Okay. So in the today's session, we are going, so our topic for today's session is recent case laws on international taxation. So I handpicked two of these decisions which came across in last 2 months, and one of them is of Supreme Court and another one is of Authority for Advanced Ruling. And if we see both these decisions, they are fairly detailed in there itself, and they have, while they have adjudicated on an issue in the relevant matter, but at the same time, they have sparked some of the issues which kind of seemed to be settled earlier. Now they seem to be unsettled. So we will discuss all of those issues which have been sparked by these case laws, and what are the key considerations for them, and what is the way forward. So let's start our discussion for today with a Supreme Court decision in the case of Pilcom. So this decision relates to TDS provisions under the Income Tax Act and TDS specifically under Section 194E. As we know, over the years, how we have seen TDS provisions progressing. So the ambit of TDS provisions, their widespread ambit, it is continuously increasing. And game of cricket is none of the difference. So this decision takes us back to around 2.5 decades of 1996 Cricket World Cup, which was hosted in India, Pakistan, and Sri Lanka. So in this matter, the tax authorities contended that some of the payments made outside India, they were subject to TDS. And on this, the matter went to Supreme Court after the long litigation of around 25 years. And in the month of April 2020, the Supreme Court has ruled against the taxpayer that yes, it was subject to TDS. While giving its decision, Supreme Court has given a very interesting observation on interplay between TDS provisions and double tax avoidance agreements, which kind of raises a lot of doubts and have sparked some queries and issues and how to deal with it. So before coming into those issues, let's discuss the brief facts and how the Supreme Court proceeded.
So in this case, there's a Pilcom, which is the abbreviation of Pakistan, India and London, Lanka Committee, which was formed by the cricket boards of India, Pakistan, and Sri Lanka for the purpose of hosting the ICC World Cup match of 1996. So, as a brief background, how does it go is uh, every fourth year, Indian International Cricket Council (ICC) conducts World Cup, for which each of the country whosoever participates in cricket expresses its interest. And every time ICC selects the particular country who should host the World Cup. So in the year 1996, this Pilcom, which was combined of India, Pakistan, and Sri Lanka, they were given this opportunity to host the World Cup in these three countries. So under this arrangement, Pilcom was required to pay certain guarantee amounts to various non-resident sports associations as well as International Cricket Council. And what was these paid for? That Pilcom will be arranging all the matches, hosting all the matches in these three countries, and it will be earning all the revenues in these three countries, whereas other non-resident countries are required to promote this World Cup in their respective countries. So they were required to pay these non-resident sports associations for the purpose of promotion of games. So in this case, Pilcom made these payments to non-resident sports associations as well as to International Cricket Council without deduction of TDS. And the matter got highlighted before income tax office, and income tax officer, ground level officer, he scrutinized all the details and subjected all such payments that they should be subjected to TDS in India under section 194E. Before going into sections, let me just tell you about the payments. These payments can be categorized into two buckets. Bucket number one, payment made to those sports associations of whose countries which either did not play at all in India or did not play in India. They did not play at all or did not play in India. And second bucket is for the country which played in India. But the tax authority considered and said that all these payments should be subject to TDS. Then before going into how this matter traveled through all the apparate forums, let's first see the relevant sections. So first relevant section is section 115 BBA, which deals with tax on non-resident sportsmen or sports associations. So it's quote unquote, I am reading the relevant portion, where the total income of an SSC, being a non-resident sports association or institution, includes any amount guaranteed to be paid or payable to such association or institution in relation to any game or sport played in India. The income tax payable by the assessee shall be the aggregate of amount of income tax calculated on income referred to in clause A, B or C at the rate of 20%. तो अगर हम इस सेक्शन को समझें तो ये कहता है कि अगर कोई एसएससी है जो नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन है और उसकी एक टोटल इनकम में इंक्लूड होती है कोई इनकम which is in the nature of amount guaranteed in relation to game played in India, तो फिर उस इनकम पे उसको 20% पे इंडिया में टैक्स देना होगा. Corresponding to this section is section 194E, which deals with TDS. It deals with recovery provision related to above income, which says where any income referred to in section 115 BBA is payable to a non-resident sportsman who is not a citizen of India or to a non-resident sports association, the person responsible for making the payment shall at the time of credit of such income or to the account of pay or at the time of payment, whichever is earlier, deduct income tax thereon at the rate of 20%. तो सबसे पहले हमें देखना है 115 BBA में इनकम है या नहीं. अगर इनकम है तो फिर पेयर को उस इनकम पे 20% पे इनकम टैक्स काट देना. ये तो रेलेवेंट सेक्शन है फॉर दिस पर्टिकुलर रूलिंग. तो इस केस में इशू वाज कि जो पेमेंट नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन को दी जा रही है ये इन रिलेशन टू मैचेस प्लेड इन इंडिया है या नहीं. वाइल इनकम टैक्स ऑफिसर ने हेल्ड किया कि सारी पेमेंट्स इन रिलेशन टू मैचेस प्लेड इन इंडिया है, बट व्हेन द मैटर ट्रैवल्ड बिफोर ट्राइब्यूनल एंड हाई कोर्ट इट वाज अपहेल्ड कि सारी पेमेंट्स इन रिलेशन टू मैचेस प्लेड इन इंडिया नहीं है. Whichever are related to matches played in India, we will apply a proportionate method and accordingly we will tax. So tribunal and high court held that
payment received by these non-resident sports association from Pilcom have arisen directly as a result of their taking part in cricket matches in India, and therefore they should be treated as income taxable. And on this particular issue, Supreme Court also reaffirmed the conclusion of Tribunal and High Court that since the cricketing event took place in India, to that extent, the source of income was India, and the entire income related to those matches played in India is taxable under Section 115 BBA. So this was one leg of the issue, that whether it qualifies as income under 115 BBA, to which a matter went up to Supreme Court, and Supreme Court finally concluded that yes, to the extent of matches played in India, this is taxable under 115 BBA. Then next and more importantly, the issue came up regarding liability to deduct TDS on Pilcom. Because if we see section 194E, let's go it here again, it says where any income referred to in 115 BBA is taxable, then it shall deduct TDS at the rate of 20%. The question is whether there is income referred to in 115 BBA or not. Now this was the issue on which Supreme Court said that yes, you are liable to deduct TDS. Then the issue came up regarding interplay of this TDS with DTAA. On this issue did not came before tribunal. On the first time, this was adjudicated by the High Court, where High Court said that obligation to deduct TDS under 194E is not affected by DTAA. So DTAA are tax treaties which India enters into various governments under Section 90 of the Income Tax Act, on which High Court said as far as TDS provisions are concerned under 194E, it is not affected by such tax treaty. So irrespective of the tax treaty, your obligation under Section 194E has to be discharged. And this observation of High Court was upheld by Supreme Court itself. But interestingly, neither the High Court nor Supreme Court discussed this particular aspect in detail. They closed this issue very summarily with, and Supreme Court, especially in para 18, which is one of the very last paragraphs in its entire decree, Supreme Court just said that 194E is not affected by DTAA. Once it is income, then yes, you are liable to deduct taxes in TDS under 194E. In case the non-resident association sees that there is a relief under tax treaty, which I was entitled to, but it is not provided to me under TDS provision, then he can surely claim that by filing an income tax return in India and claiming the TDS, a refund of excess TDS so paid in India. So this was the decision of Supreme Court. So now, if we observe this decision and this particular finding of Supreme Court as regards non-applicability of DTAA or Section 194E, we could see there are many provisions and many challenges which could have come across, but Supreme Court did not observe that and did not commented upon them in any manner. So in the ensuing slides, I have discussed some of those concerns which actually raised doubt on this particular aspect. So first point is the payment in the current case is income as per Section 4. So let's run through the entire scheme of TDS under the Income Tax Act. So under Section 4 subsection 2, it says that TDS shall be deducted in respect of income chargeable under subsection 1. So TDS, which is deductible under all these provisions including 194E, is subject to Section 4 subsection 2, which says it has to be deducted in respect of income chargeable under subsection 1. And what is income chargeable under subsection 1? It has just been written below this thing. Section 4.1 outlines the charge of income tax, where it says where any central act enacts that income tax shall be charged for any assessment year at any rate, income tax at that rate shall be charged for that year in accordance with and subject to the provisions of this act in respect of the total income of the previous. So if we see Section 4.1 creates charge of income tax subject to provisions of this act. And in the provisions of this act, there is specific Section 90, which says that if the Indian government has entered into tax treaty with any foreign government, then such non-resident, with the resident of such foreign country, he can claim the benefit of such tax treaty. So while my income may be taxable under other provisions of the Act, but if it is not taxable under tax treaty, read with Section 90, then yes, it may not be said that it is tax subject, that it is
qualified as income under section 4 subsection 1. So the question is whether this provisions of this act should include section 90 or not. If the answer is yes, Supreme Court should have actually seen whether the income earned by non-resident sports association was taxable under tax treaty or not. If no, then no TDS should have been deducted. Whereas Supreme Court very clearly said. So I leave it here and I move on to next issue related to this. Now next I have raised section 5, which defines dealing with meaning of total income and its interplay with section 5. As we have seen, section 115 BBA, just before this section, I'm going there again. It says starts with the expression where the total income of a necessity. So it starts with the expression where the total income. Let's see what is the meaning of total income. Total income is defined in section 2 of section 45, which means total amount of income referred to in section 5. And next we see section 5. Section 5 it says starts with the expression subject to provisions of this. So again, this total income under 115 BBA is also subject to provisions of this act, which again coming back to my same question, whether this provisions of this act expression will include section 90 or not. So this include section 90. This has been fortunately answered by Supreme Court itself in its prior ruling in the case of Azadi Bachao Andolon. This was the case where the court was dealing with the taxability of a Mauritius-based under Mauritius Treaty, and it was deciding the income tax liability of that Mauritius company in India. So this is the relevant para 20 of the decision, which is quote unquote, the provisions of section 4 and 5 of the Act are expressly made subject to the provisions of the Act, which would include section 90 of it. So stopping here, Supreme Court very clearly said that provisions of this act should include section 90. And Supreme Court does not stop here. It specifically then says as to what would happen in the event of a conflict between the provisions of Income Tax Act and a notification issued under section 90 is no longer res integral. So Supreme Court very clearly says, so it should that provisions of this act under section 4 or 5 will clearly include section 90, and there is no doubt in that. There is no longer less integral in that. So this is one key consideration which we could think of in this Supreme Court decision, that while deciding whether this particular payment is income or not, why they did not refer to section 90 is still the question for this decision. Whereas in its own earlier decision of Azadi Bachao, Supreme Court specifically said for treating of income, it should include section 90. Moving on to some other issues. It has been time and again held by various courts that Income Tax Act in entirety is an integrated code. Not only this, dealing with the provisions of TDS in Supreme Court decision of Eli Lilly itself, court said that TDS provision in chapter 17B form an integrated code with the charging and computation provisions under the 1961 Act. What Supreme Court said that all the provisions of Act are integrated with one another, and TDS provisions is not an exception. It is also an integrated code with the charging and computation provisions. And our section 4, section 5, and section 90 form part of charging and computation provision. So why does the TDS provision under section 194E in the instant case is not integrated with section 90 is again put to question if we read this particular line by Supreme Court itself in the case of Eli Lilly. Another aspect which Supreme Court did not discuss at all, and it is kind of practically it was seen as almost a settled position because there were numerous decisions in favor of this position. So let me give you a brief background for this matter first. So the issue was with regard to interplay between section 206 AA and section 90 of the Income Tax Act. So section 206 AA is again another provision under chapter 17B, which says where the non-resident does not have a permanent account number in India, then any income he is earning, even if any income he is earning, should at minimum be subject to TDS at the rate of 20%. So and mind you, it starts with the non-obstante clause
In other words, it overrules entire provisions of the Act. The question which arose is, if I am making a payment to non-resident who does not have a PAN number in India, then say, as per treaty, his income is taxable at the rate of 10%. But as per 206AA, since he does not have a PAN number, his income is subject to tax at the rate of 20%. Then does this mean that 206AA will override Section 90? So this matter traveled to Pune Tribunal first in the case of Serum Institute of India Limited. And the Pune Tribunal decided the matter in the favor of taxpayer that 206AA cannot override over Section 90. And the relevant observations which Pune Tribunal gave, which are very much applicable in the instant fact pattern as well, I have just quoted here for a kind of quote unquote. It would also be relevant to observe that even the charging section 4 as well as charging section 5, which deals with the principle of ascertainment of total income under the Act, are also subordinate to the principle enshrined in section 90 subsection 2. That is, so tribunal is saying that 4 and 5 are subordinate to the principle of section 90. That is, section 90 means tax treaties. It further clarifies that it would be quite incorrect to say that even though the charging section 4 and 5 dealing with the ascertainment of total income are subordinate to the principle enshrined in section 92, but the provisions of chapter 17b, that is TDS, governing TDS, are not subordinate to section 90 subsection 2. So if we read these two paragraphs itself from the Pune Tribunal decision, so it kind of covers this entire scheme which we were discussing now. First, it confirms, applying Azadi Bachao, that 4 and 5 is subject to section 90. Secondly, it also goes further and says chapter 17b, that is entire TDS chapter, is also subject to section 90. So ultimately, Pune Tribunal concluded that 206AA cannot override section 90 because of this reason. And this particular reason should also be squarely applicable in the current facts of Pilcom as well. Because here also it is under chapter 17b, 194E, but they have not tested provisions of section 90 at all. And rather they have gone contrarily and said that DTAA are not to be read for TDS provision. And just for the sake of completion, this Serum decision has been applied in various other decisions, including Infosys of Bangalore Tribunal and also Delhi High Court in the case of Danesco India, where this particular operative part of the Serum decision has been quoted as it is. So these were the few issues which came out of the observation of Supreme Court, which it seems that Supreme Court has not considered while giving its decision. निशांत भैया, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि 195 पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? Sure, Nitin ji. Thanks for raising this question, and this is a very valid question, and which is actually going to be held. Technically, see, section 195 is very much applicable in our daily life. So let's first see before seeing whether this impact of the decision on section 195, let's read what is section 195 says. I've quoted subsection 1 of 195 here for everyone's reference. I'm reading it out. Any person responsible for paying to a non-resident any other sum chargeable under the provisions of this Act shall, at the time of credit of such income to the account of the payee, or at the time of payment thereof in cash or by issue of check or draft or by any other mode, whichever is earlier, deduct income tax thereon at the rates in force. So let's just stop here and try to compare this with the section 194E, which we read few minutes back. The text in bold and underlining one here in the screen before you. Two different texts chargeable under the provisions of this Act and deduct income tax at the rates in force. These two expressions are missing in 194E. So these seems to be a very critical factor for differentiating the 194E, 195, and why the decision of Supreme Court in Pilcom may not apply to 195. Below we have discussed both the expressions in detail. First, rates in force. So section 2 itself defines the rates in force, which says rates in force means for the purpose of TDS under section 195,
the rates of income tax specified in this behalf in the finance act of the relevant year, that is जो income tax में rate दिया हुआ है, or the rate or rates of income tax specified in an agreement entered by central government under section. तो देखा जाए 195 में ही गवर्नमेंट ने अपने आप ही DTAA का रेट के लिए लॉ में ही स्पेसिफिकली कार्व आउट दे दिया कि आपको टीडीएस किस रेट पे काटना है, रेट्स इन फोर्स पे, और रेट्स इन फोर्स का मीनिंग है या तो इनकम टैक्स का रेट या फिर टैक्स ट्रीटी का. दैट इज वन की डिफरेंस बिटवीन 194E and 195. Second is 195 specifically says any sum chargeable under the provisions of this act. And this expression was specifically discussed by GE Technologies by Supreme Court in the case of GE India Technology, जहाँ पे court was dealing with taxation of a non-resident in India and liability to deduct TDS under 195. यहाँ पे court ने specifically observed किया what is the ambit of this expression chargeable under the provisions of this act. I'm just reading it out the relevant portion of the para 7 of the Supreme Court decision. It is important to note that the tax which is required to be deducted at source is deductible only out of the chargeable sum. This is the underlying principle of section 195. Hence, apart from section 9, sections 4, 5, 9, 90 and 91 as well as the provisions of DTAA are also relevant while applying tax deduction at source provision. So I think it makes it very clear that as far as section 195 is concerned, because of these two differences, presence of these two expressions in 195, which are otherwise absent in 194E, makes it very clear that as far as 195 is concerned, legislature itself says that applies section 190 very directly says. So as far as impact on 195 is concerned, then to answer your question, Nitinji, that no, this decision of Pilcom should not be applicable as on section 195 because of these key differences. Yes, but again, this is the same question. We are going back to our original question that while there is no specific expressions like this in 194E, we agree to that. But going by the scheme of the act, which we just discussed, like starting from section 4, then meaning of chargeable, then going to Azadi Bachao, then again meaning of term income, then still that question remains unanswered. And because of decisions of some Serum Technology or IBM Infosys, it raises the question that why Supreme Court did not consider that and just proceeded on the basis of court and said that DTAA is not required to proceed. Then let's see. सर मुझे ना इसमें क्या लग रहा है, सर मुझे क्या लग रहा है निशांत भैया, कौन सा पूछिए आप जो पूछ रहे हैं. निशांत जी ये बताइए, इसमें निशांत जी ये इश्यू ये आ रहा है कि ये पॉइंट कंसीडर नहीं हुआ, तो जी व्हाट डू यू थिंक कि द ऑब्जेक्ट सीरम का केस है, सीरम केस दैट इज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस एंड द सुप्रीम कोर्ट हैज गॉन divested itself from all those issues and directly concentrated on this decision. So how do you react to it, whether there is any other possibility still left out, or this has attained a finality? Right, sir. So clearly Supreme Court has not discussed any of these aspects which we just highlighted. So to that matter, this decision on this interplay between DTAA and 194E seem to be incomplete as far as Supreme Court decision is concerned. And as we all know, there are numerous Supreme Court decisions itself which say where a particular decision is not speaking in terms of why it arrived at that conclusion and why it did not consider other decisions, then yes, there is a plausible view to say that this should not be applicable squarely, and this matter requires further consideration. So, but that is again a more of a legal call to take. And as we all know, sir, that TDS provisions, if they are not followed, they impose so much of onerous obligations on the deductor. So much onerous obligations, right from tax liability to penalty, that that every deductor, as far as deductor is concerned, he will always be, and with these kind of decisions coming up, he will not try to take any particular risk. At practical level, he may be just burdened to deduct the TDS,
and that non-resident, even if his income is not taxable or taxable as a lower rate, he will have to pay excess tax in India and later claim it by way of refund. और सर मुझे क्या लग रहा है कि जो पिलकम लॉ केस है ना, इसमें बेसिकली जो फर्स्ट एक्सप्रेशन जो निशान भैया ने पुट भी किया है, रेट्स इन फोर्स और टैक्स रेट. द टैक्स रेट इज 195 में क्या रेट्स इन फोर्स की बात कर रहा है, सेक्शन 237 ए की बात करता है, उसको थर्ड कॉलम बोलता है, जहाँ पे वो डीटीए की बात भी करता है. तो इशू ये है, वहां पे वो खुद ही बोल रहा है, चॉइस दे रहा है, या डीटीए का रेट या एक्ट का रेट, व्हिचएवर इज मोर बेनिफिशियल, आप ले लो. वो चुप रादर उसमें चुप हो जाता है, उसमें चुप हो जाता है. इट इज ड्यू टू सेक्शन 90 वी टेक व्हिच इज मोर बेनिफिशियल. वेराज सब जब 194 ई की बात करते हैं, या एलबी सेक्शन जो हमने दिखाए हुए हैं, ये सारे सेक्शन टीडीएस स्टेट के स्पेसिफिक दे रहे हैं. प्रॉब्लम कहाँ पे है, जो भैया ने जो पहले पॉइंट आउट किया था, तो सर वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ इनकम, अगर आप 194 जे की बात करें या फिर कोई 194 सी की बात करें, वहां पे पेमेंट की बात कर रहा है, एनी पेमेंट मेड या फिर अमाउंट क्रेडिटेड समथिंग ऐसे बोलता है, वहां इनकम की बात नहीं करता है. तो प्रॉब्लम क्या है, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ये कहना चाहता है, जब आपको रेट दे दिया और आपको लगता है आपकी इनकम नहीं है, पर इनकम एम्बेडेड जैसी कोई चीज है, अगर मान लो हाइपोथेटिकली, तो ऐसे केस में आपको 197 लेना चाहिए था, 192 में जाना चाहिए था, या 193 में जाना चाहिए था. मेरा मानना ये है. निशांत भैया मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल नितिन जी, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है. ये पेमेंट और इनकम के बीच में जो डिफरेंस है, ये हमारे टीडीएस प्रोविजन में काफी देखा जा सकता है. जैसे आपने सही मेंशन किया, 194 सी में या 194 जे में पेमेंट वर्ड यूज है, इनकम यूज नहीं है. और ये इनकम की ज्यादा रेलिवेंस रेसिडेंट्स के केस में नहीं आती, क्योंकि वहाँ पे सेक्शन 90 नहीं आता. इसकी रेलिवेंस सारी नॉन रेसिडेंट वाले सेक्शन में आती है, जो मैंने अभी आपके स्क्रीन पे भी लगाई हुई है. तो 194 इज वन एग्जाम्पल विच इज नॉट सो कॉमन. अगर मैं ये सीरीज पे देखूं, अराउंड ये 7-8 प्रोविजंस हैं जहाँ पे नॉन रेसिडेंट वाले केस डिस्कस्ड है, जहाँ पे चार्जेबल टू टैक्स नहीं लिखा हुआ, जहाँ पे रेट्स एंड फोर्स नहीं लिखा हुआ, और ऑलमोस्ट लैंग्वेज 194 ई के सिमिलर है. तो यहाँ पे हम अभी तक प्रैक्टिकली ट्रीटी का बेनिफिट लेके ही टीडीएस काट रहे थे. इवन स्पेसिफिकली 194 एलसी या एलडी की बात करें, जो इंटरेस्ट की बात करते हैं, हमें पता होगा इंटरेस्ट के लिए ट्रीटी में एक बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट होता है कि पेड वर्सेस पेबल वाला, कि अगर इंटरेस्ट पे नहीं किया बस पेबल है, तो उस पर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं होती. बट अगर हम पिलकॉम का डिसीजन लगाते हैं, तो वो सब इज नाउ नॉट रेलिवेंट एट ऑल, क्योंकि हम ट्रीटी लगा ही नहीं सकते जब टीडीएस की बात करते हैं. तो सिमिलरली अगर हम इनकम ऑफ क्यूएफआई या क्यूएफआई की बात करते हैं, इनके इंटरेस्ट पे टीडी सारी ट्रीटीज में रेट 10% का दिया हुआ है, और जहाँ तक 196 सी की बात है, वो 20% का रेट देती है. तो इनकी काफी फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस होनी चाहिए. और जितने भी नॉन रेसिडेंट पेज वाले सेक्शंस हैं, गोइंग बाय सिंस दे आर सिमिलर टू 194 ई, तो इट सीम्स कि all now the position will change practically, and now we all will be forced to deduct TDS at the rate of the rate provided under the act itself, even if it may not be taxable or taxable at the lower rate under the treaty. One more impact which we could see from this decision is that now what will happen to the position on section 206AA, which will also include section 195. जो पोजीशन अभी तक सेरम और आईबीएम बीपीओ ने ऑलमोस्ट सेटल कर दी थी, क्योंकि कोई अनफेवरेबल डिसीजन नहीं था, रेवेन्यू ने इनके अगेंस्ट कंटेस्ट नहीं किया था, so these decisions seem to be the positions finally. But now with this decision, can someone say that serum decision has been overruled, and now going forward, where the non-resident does not have a pen, and even if it is a case of section 195, still you will be liable to deduct TDS at least at 20% under 206AA. So this is another question which gets opened because of these observations of Supreme. लेकिन भैया निशांत भैया, इस केस में क्या होगा, आपको 37 रूल नंबर 37 बीसी है वहाँ पे, राइट? और 37 बीसी में क्या होता है कि अगर आपका पैन नंबर नहीं है और आपको टीआरसी है और वो 2-3 चीजें और भी मांगता है, वो अगर वो है तो आपको नहीं लगेगा. आप डीटीडब्ल्यू तभी बढ़ पाएंगे जब आपका टीआरसी होगा. ठीक है भैया, जब आपका टीआरसी नहीं होगा डीटीडब्ल्यू नहीं पढ़ पाएंगे. वो बात अलग है, आप अगर सेक्शन 90 सब्सेक्शन 4 में दोबारा इंटरप्ले पढ़ना शुरू कर दे, क्योंकि वहां पे सेक्शन 90 बात करता है रिलीफ एंड अवॉइडेंस की बात करता है. अब बहुत सारे केस लॉज इस बात पे आ गए हैं कि भैया जहाँ पे आप अवॉइडेंस की बात कर रहे हो, क्योंकि सेक्शन 90 सब्सेक्शन 4 से रिलीफ की बात कर रहा है, तो इसलिए आपको टीआरसी नहीं चाहिए. अगर वो पढ़ना शुरू कर दे तो बात दिक्कत आएगी सर, मैं कह रहा हूँ आपको. पर अदरवाइज आप आज तक का तो सबका माइंड मेकअप ही हो गया है कि टीआरसी होगा तो डीटीडब्ल्यू पढ़ पाऊंगा, अपना पढ़ ही नहीं पाऊंगा. नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है. जो रूल 37 बीसी है, उसके आने से 206AA का रिगर काफी डाइल्यूट हो गया. बट अगर हम अभी भी देखें, वो 234 जो 37 बीसी वाली नोटिफिकेशन है, वो कुछ स्पेसिफिक इनकम पे ही लगती है.
जो इंटरेस्ट, रॉयल्टी, एफटीएस पे वो लगता सही कह रहा है। हूँ, ये बहुत कॉमन एग्जांपल देता हूँ, वो डिविडेंड पे नहीं लगता। हाँ टैक्सेबल हो जाएगा, वो सही कह रहा हूँ। अगर आप गोइंग फॉरवर्ड, जैसे हमें पता है डीडीटी एबॉलिश हो गया 1 अप्रैल के बाद, अगर आप नॉन रेसिडेंट को डिविडेंड देते हो तो अंडर द एक्ट आपको 20% पे काटना पड़ेगा, ठीक है। मैक्सिमम बहुत ट्रीटीज हैं जहाँ पे 10% या 5% का रेट है। अगर और करंट रूल 37 BC डिविडेंड को कवर नहीं करता, समझ रहे हो ना सर। तो अगर हम उसको इन सब डिसीजन के साथ पढ़ें तो फिर डिविडेंड के केस में करेंटली अप्लाइंग दिस डिसीजन देयर इज अ हाई एक्सपोजर टू नॉट अप्लाई ट्रीटी and rather to deduct TDS at the higher rate of 20, even if tax treaty says to deduct TDS at the rate of 10%. एकदम And that is the दिक्कत, case of 195. वो दिक्कत आएगी सर, अब जो लोग डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे बिल्कुल उनको दिक्कत आएगी सर। बिल्कुल। पॉलिटिकल सर। So this was the decision on this Pilcom, which I just discussed. Next, I want to move to another decision of Authority for Advanced Ruling, which was rendered in last month in the case of Tiger Global. It is a much talked about decision, and more because of the stakes involved as well as the popularity of the parties involved. This decision relates to the famous deal of Flipkart and Walmart. हमें पता होगा, हम पिछले 3-4 साल से न्यूज़पेपर में देखते हैं, वॉलमार्ट यूएसए ने, जो फ्लिपकार्ट इंडियन कंपनी है, इंडियन स्टार्टअप कंपनी थी, वॉलमार्ट यूएसए ने उसके शेयर्स खरीदे. This decision is related to the same transaction. So before going into the more entrances and nuances of this decision, let me just discuss the entire structure, because this structure is very much relevant for this decision. So in this decision, in this case, there was a Tiger Global PE fund. It is a very renowned PE fund, and it is based out of USA, which I have referred as a holding company at the first leg of this structure. ये holding company was founded and इसका partner थे Mr. Y, who was also a US resident. So holding company held certain companies in Cayman Islands, which is a tax-friendly jurisdiction. Cayman Islands further held shares in a Mauritius-based company. This Mauritius company further held shares in Flipkart Singapore, and Flipkart Singapore ultimately held shares in Flipkart India. Out of this entire structure, mainly it's Flipkart India which had all these substance. So the shares and this, what was the transaction? The Mauritius company, which I have referred as applicant here, who is the seller, that sold the shares of Flipkart Singapore to a buyer based in Luxembourg. जो लग्जमबर्ग वाली बायर है, ये वॉलमार्ट ग्रुप का ही कंपनी है. वॉलमार्ट भी ऐसे ही, अगर हम पैरेलली ड्रॉ करें, एक यूएस में वॉलमार्ट कंपनी है, उसकी एक स्टेप डाउन सब्सिडरी है, बायर है जो लग्जमबर्ग. तो अंडर दिस ट्रांजेक्शन हमारे केस में बायर था लग्जमबर्ग कंपनी, सेलर था मॉरिशस कंपनी, और एसेट्स अंडर सेल थे शेयर्स ऑफ फ्लिपकार्ट सिंगापुर. सो एज वी जस्ट डिस्कस सेक्शन 195. तो 195 बोलता है वेयर यू आर मेकिंग पेमेंट टू अ नॉन रेसिडेंट and such payment is chargeable to tax in India, then you are liable to deduct. And 195 में ये भी क्लियरली बोला हुआ है कि ये ट्रिगर सिर्फ रेसिडेंट पे नहीं है, ऑब्लिगेशन बस रेसिडेंट पे नहीं है, नॉन रेसिडेंट पे भी इक्वली अप्लाई करती है. तो इस केस में लग्जमबर्ग एंटिटी जब पेमेंट कर रही है मॉरिशस एंटिटी, तो लग्जमबर्ग एंटिटी पे ओनर्स है क्लियरली कि आप, अगर ये ट्रांजेक्शन मॉरिशस के हाथ में टैक्सेबल है, तो आपको 195 में इंडिया में टीडीएस जमा करना है. तो कहानी सारी इस इशू से स्टार्ट. So now let's discuss the brief facts which will be relevant for our discussion. The shares of this Flipkart Singapore were acquired by Mauritius company before 1st April 2017. Why I am stating before 1st April 2017? We will understand this relevance of this date in our for future discussion. It was a grandfathering route, right? Absolutely. Then this taxpayer who was Mauritius company, first what it did, हमारे इनकम टैक्स में एक स्पेसिफिक प्रोविजन होता है 197 का, जिसमें अगर हमें लगता है कि हमारी इनकम पे टीडीएस नहीं कटना चाहिए या कम रेट पे कटना चाहिए, हम टैक्स अथॉरिटी के पास सुओ मोटो जाते हैं एंड वी फाइल देयर एप्लीकेशन कि हमारी ये इनकम है, ये नेचर है, इस पे आप हमें सर्टिफिकेट इशू कर दो, इस पे टीडीएस नहीं कटना चाहिए या इस कम रेट पे कटना चाहिए. तो यहाँ पे मॉरिशस कंपनी ने यही किया. मॉरिशस कंपनी ने एप्लीकेशन फाइल करी इंडियन इनकम टैक्स अथॉरिटी. इंडियन इनकम टैक्स अथॉरिटी ने मॉरिशस कंपनी की बात नहीं मानी और उन्होंने बोला कि आपकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल है, क्योंकि आपको इंडिया मॉरिशस ट्रीटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा. वो भी हम डिटेल में डिस्कस करें.
और उन्होंने टैक्सेबल है ये बोल दिया और एक रेट दे दिया, इस रेट पे आपको टीडीएस काटना, लग्जमबर्ग को टीडीएस काटना पड़ेगा। रेट कैसे डिसाइड हुआ ऑल्दो डिस्कस नहीं है, बट अज्यूमिंगली इट शुड बी, क्योंकि हमारा जो गेन होता है वो होता है सेल माइनस सेल कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और रेट है 10% ऑन दैट गेन। तो यहाँ पे 6 to 9% का सर्टिफिकेट दिया ऑन द ग्रॉस वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो जो बैलेंस है 1 to 4%, दैट शुड रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बट मॉरिशस एंटिटी इस सर्टिफिकेट से सेटिस्फाइड नहीं थी, दे वर ऑफ द व्यू कि देयर इनकम इज नॉट टैक्सेबल, so they finally approached the authority for advanced rulings in India and filed the application before. So the issue before authority was whether this transaction is subject to tax in India or not. यहाँ पे मैंने ब्रीफ फैक्ट्स में हर बुलेट के आगे रेलिवेंट डेट्स भी लिखी हुई, एक बार ये नोट कर लेते हैं जो हमारे नेक्स्ट डिस्कशन में रेलिवेंट हो। टैक्स पेयर ने इंडियन अथॉरिटीज को एप्लीकेशन फाइल करी थी 2 अगस्त 2018 को। इंडियन अथॉरिटी ने सर्टिफिकेट इशू किया 17 अगस्त 2018 को, और टैक्स पेयर AAR के पास गए 19 फरवरी 2019। ठीक है, अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं व्हाट हैपेंड बिफोर AAR। तो AAR में, जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ बैकग्राउंड, देयर इज अ प्रोसेस। वंस यू फाइल द एप्लीकेशन, उसके बाद टू स्टेप प्रोसेस होता है। स्टेप नंबर 1, AAR चेक करती है कि ये एप्लीकेशन लाइबल टू वेदर दे शुड एडमिट दिस एप्लीकेशन और शुड दे रिजेक्ट दिस एप्लीकेशन। इसके लिए हमारे इनकम टैक्स लॉ में कुछ केसेस दिए हुए, कुछ सिनेरियोज दिए हुए कि अगर ये सिनेरियो फुलफिल हो जाते हैं तो AAR एट इट्स ओन डिस्क्रिशन कैन रिजेक्ट द एप्लीकेशन। अगर केस रिजेक्ट हो जाता है तो वहीं पे क्लोज हो जाता है, AAR आगे नहीं प्रोसीड करती। ऑब्वियसली अगर AAR एप्लीकेशन एडमिट कर देती है तो फिर वो स्टेप नंबर 2 पे जाती है, जहाँ पे वो एप्लीकेशन में अपनी टैक्स के ऊपर अपनी अपनी कमेंट्स और अपनी व्यूज देती है। तो इस केस में अभी हम पहले स्टेप पे हैं कि यहाँ पे एप्लीकेशन एडमिट होनी चाहिए, रिजेक्ट होनी चाहिए। तो पहले हम डिस्कस करते हैं लॉ क्या कहता है कि किस केस में रिजेक्ट कर सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 245R में 3 केसेस बताते हैं किस केस में AAR के पास डिस्क्रिशन है रिजेक्ट करने। ये तीनों केस हम ध्यान से डिस्कस करते हैं क्योंकि ये बहुत रेलेवेंट। केस नंबर 1 कहता है वेयर द क्वेश्चन रेज्ड इन द एप्लीकेशन इज ऑलरेडी पेंडिंग एडजुडिकेशन बिफोर एनी इनकम टैक्स अथॉरिटी और ट्राइब्यूनल। यहाँ पे जो रेलिवेंट एक्सप्रेशन है वो ऑलरेडी पेंडिंग। तो लॉ कहता है अगर जिस इशू के लिए टैक्स पेयर अथॉरिटी के पास आया है वो सेम इशू किसी इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास भी पेंडिंग है तो फिर AAR के पास पावर है रिजेक्ट करने। और काफी लॉजिकल सी बात है, लॉ ये नहीं चाहता कि आप टैक्स पेयर को वो ऑप्शन देना नहीं चाहता कि आप और एक रूट दो रूट्स ले लो, AAR के पास भी जाओ और इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास। लॉ चाहता है आप एक ही रूट लो एक बारी में, यू कैन नॉट डू फोरम शॉपिंग। अब मैं एग्जाम्पल के साथ देता हूँ, मान लो मेरी नॉर्मल असेसमेंट हो रही है 143(3) में और असेसिंग ऑफिसर ने कुछ एडिशंस करी टू विच द असेसी इज नॉट सेटिस्फाइड। तो असेसी के पास पावर होती है टू अप्रोच कमिश्नर अपील। असेसी ने अपील फाइल करी, कमिश्नर अपील। अब असेसी को कोई भी रीजन हो सकता है, असेसी को लगता है कमिश्नर अपील ऑर्डर पास नहीं कर रहा, मेरे को जल्दी ऑर्डर चाहिए, या फिर असेसी को लगता है कमिश्नर अपील तो हो सकता है मुझे फेवरेबल ऑर्डर ना मिले। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, असेसी AAR के पास भी जा सकते हैं। एज्यूमिंग द ट्रांजेक्शन विल क्वालिफाई एज क्वालिफाइबल ट्रांजेक्शन AAR में, क्योंकि सारी ट्रांजेक्शन नहीं जा सकती, कुछ ही जा सकती। तो फिर इन तरह के केसेस को रोकने के लिए इनकम टैक्स लॉ मेकर्स ने क्लियरली बोला है आप नहीं कर सकते। अगर किसी अथॉरिटी के पास ऑलरेडी पेंडिंग है आप AAR के पास नहीं जा सकते। दूसरा सिनेरियो है वेयर द क्वेश्चन रेज्ड इन द एप्लीकेशन इन्वॉल्व्स डिटर्मिनेशन ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी। AAR कोई वैल्यूएशन अथॉरिटी नहीं है, आप वहाँ पे वैल्यूएशन के लिए नहीं जा सकते। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, where the question raised in the application relates to a transaction or issue which is designed prima facie for the avoidance of income tax। यहाँ पे उन्होंने AAR को बहुत वाइड पावर दे दी। अगर AAR को लगता है कि केस टैक्स अवॉइडेंस के लिए है, प्राइमा फेसी टैक्स अवॉइडेंस के लिए डिजाइन किया गया है पूरा स्ट्रक्चर, तो फिर वो एट द आउटसेट रिजेक्ट कर सकते हैं। एंड द रीजन विच सीम्स लॉजिकल ऑल्सो कि अगर टैक्स अवॉइडेंस का केस है, नॉर्मली इनकम टैक्स अथॉरिटी उसको डिटेल में देखना चाहिए। और अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग का जो बैकग्राउंड है, इट वाज मोर अ काइंड ऑफ फॉर सच ट्रांजैक्शन व्हिच कैन बी कंक्लूडेड विद इन अ वेरी लेस टाइम फ्रेम एंड
judge does not need to go into the actual principle. ऐसे केसेस होते हैं यहाँ पे हम चाहेंगे हमारे इनकम टैक्स ऑफिसर्स डिटेल में देखें और ये केस उन्हीं के पास जाने चाहिए, अथॉरिटी के पास नहीं जाने। तो ये हमारी 3 बकेट्स हैं, यहाँ पे AAR के पास पावर है रिजेक्ट करने। अब हम एक एक करके देखेंगे हमारे केस में कौन सी बकेट रेवेन्यू ने एलेज करी और फिर AAR ने कौन सी बकेट को माना। तो फर्स्ट इज रेवेन्यू आर्ग्यूमेंट्स। एज फार एज बकेट 1 इज कंसर्न, AAR ने बोला ऑल्दो इनके केस में क्या हुआ, पहले 197 की एप्लीकेशन फाइल करी, फिर वो रिजेक्ट हो गई, फिर टैक्स पेयर अथॉरिटी के पास आई, लेकिन रेवेन्यू ने बोला लेट्स सी इट लॉजिकली। देखा जाए तो प्रोसीडिंग्स तो कंक्लूड हो गई ना, पेंडिंग नहीं है लेकिन कंक्लूड हो गई। इनकम टैक्स अथॉरिटी ने दे हैव अप्लाइड देयर माइंड, दे हैव देयर आफ्टर दे हैव गिवन द सर्टिफिकेट, तो द प्रोसीडिंग शुड बी कंक्लूडेड। AAR इज नॉट द राइट फॉर, इसके लिए उन्होंने एक AAR का ही डिसीजन अरेवा एनपी सास को रेफर किया, वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दिस वाज फॉर बकेट 1। बकेट 2 के लिए निशांत भैया, सुमेधा गुप्ता ने हैंड रेज किया है, शैल आई अलाउ टू टॉक अभी या फिर ये वाला केस लॉ खत्म होने के बाद फिर आप इनको अलाउ कर दूं? हाँ नितिन जी, ऐसा करते हैं केस लॉ के बाद ही एक साथ, ये वाला केस लॉ खत्म करने के बाद सर कई बार होगा इसी रिलेवेंट होगा तो इनको अलाउ कर दूंगा, ठीक है ना? ये वाला केस लॉ खत्म होगा, बिल्कुल बिल्कुल। सुमेधा जी इसके बाद कर लेंगे, इस केस लॉ के बाद कर लेंगे, ठीक है। तो बकेट 1 के लिए रेवेन्यू के आर्गुमेंट्स हमने देखे। बकेट 2 के लिए रेवेन्यू वाज ऑफ द व्यू व्हिच इज काइंड ऑफ अपीयरिंग टू बी अ वेरी जस्ट फॉर द नेम से ऐसा लग रहा है उन्होंने आर्गुमेंट लिया कि कैपिटल इन कंप्यूटेशन इन्वॉल्व्स वर्किंग ऑफ टोटल सेल्स कंसिडरेशन, और टोटल सेल कंसिडरेशन इज इन टर्न डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ शेयर। तो अल्टीमेटली आप वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स पे कमेंट करें। और जो थर्ड बकेट है विच वाज प्राइमा फेसी फॉर अवॉइडेंस ऑफ टैक्स, इसको हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करें। तो हम पहली 2 बकेट्स को भी डिस्कस करते हैं। तो एज फार एज पेंडेंसी वाज कंसर्न, AAR ने बोला कि while the proceedings have concluded, but what is relevant to see is whether the question is pending or not, and that also we have to see on the date of application. AAR ने बोला क्योंकि डेट ऑफ एप्लीकेशन पे कुछ पेंडिंग है, तो इसलिए हम इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते और डिस्कस। As far as this decision of AREVA NP SAS is concerned, AAR distinguished on this facts. ये जो डिसीजन है दिस वाज नॉट कुड नॉट बी ट्रेस्ड पब्लिकली, बट ये बहुत ही समरली वे में इस डिसीजन में डिस्कस्ड है, तो हम वही फैक्ट्स आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं जो AAR ने डिस्कस किया। AAR ने बोला AREVA NP में टैक्स पेयर क्या कर रहा था, वो फॉर्म शॉपिंग कर रहा था। उन्होंने पैरेलली कॉन्करेंट एप्लीकेशन डाली, इधर 197 डाली एंड एट द सेम टाइम इधर AAR डाली, which is not allowed. And secondly also, what was different fact was that they did not make appropriate disclosure before the AAR. So this was the reason AREVA NP SAS was not applicable, and since there was no pendency, so this is not the right ground. On the second ground, AAR clearly said that we are only concerned with chargeability of the tax, and the question of determination of FMV does not arise. So both the grounds of revenue were set aside by the AAR. So now the remaining is third bucket, which is whether the transaction is designed prima facie to for avoidance of tax or not. So if we see, अगर हम एक बार इस वाले एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करते हैं, इट सेज ट्रांजैक्शन डिजाइन प्राइमा फेसी फॉर अवॉइडेंस ऑफ टैक्स और नॉट, तो ये टैक्स अवॉइडेंस को के लिए है। एंड एज वी ऑल नो देयर हैज बीन अ लॉन्ग स्टैंडिंग लिटिगेशन ऑन द इशू whether a particular transaction is tax avoidance or tax planning. ये तो बहुत ही सिमिलर टर्म्स हैं जिनका इंटेंट पे हमें जाना पड़ता है टू ड्रॉ द डिस्टिंक्शन बिटवीन दोज। इट इज अ काइंड ऑफ सब्सटेंस ओवर फॉर्म टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स प्लानिंग। देयर इज अ वेरी नैरो लाइन बिटवीन दिस, और ये टाइम टू टाइम काफी डिसीजन में डिस्कस हुई है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आजादी बचाओ, मैकडॉवल्स और वोडाफोन। तो विद दिस बैकग्राउंड, रेवेन्यू ने क्या बोला कि दिस इज अ टैक्स अवॉइडेंस। So revenue dig into lot of facts, which we should appreciate actually. Revenue dig into lot of facts and designed its arguments in 4 buckets. Bucket number 1, they said, let's see the overall ownership structure and control. They said, we could not appreciate why was there a need to set up a company in Mauritius. They said this company in Mauritius was set up solely for making investment in India. It did not make any investment in any other country. It only made investment in India through Singapore. More so, they said we have observed
that even if it is a Mauritius company, still it is managed day to day by its US parent, and therefore it is just a conduit, whereas its real owners are based out of US. So we should say, as per revenue, that Mauritius was just a conduit or sham company. It did not have any substance of its own. It was just interposed for tax avoidance. How did Mauritius substantiate this? They gone into further aspects. First, they say who is actually making their decisions. Mauritius revenue authorities ने Mauritius company के minutes of board meeting देखे और उसमें उन्होंने observe किया कि there is one person, Mr. X, who is a US resident and general counsel of the US PE fund. He was attending all the meetings in which most crucial decisions were taken, and other directors were in fact mere spectators or took the advice from Mr. X. अब यहाँ पे ये बहुत important statement कि Mr. X was taking crucial decision and other directors were mere spectators. As far as meaning of the term crucial decision, because this is a very subjective, what decision is crucial? इसके लिए Mauritius revenue authorities gave good level of examples with evidences which seem to be reasonable and logical. They said this is an investment company, Mauritius को. इसका business क्या है? Companies में share खरीदना और share बेचना. तो इसके लिए crucial decision यही होंगे. When to purchase, how to purchase, and from whom to purchase, and when to sell, how to sell, from whom to sell. ये सारे decisions इन्होंने जब लिए, वो तब लिए जब Mr. X was there in the board meeting. And basically minutes, it was appearing that Mr. X was calling all the shots. It was Mr. X who was deciding whether to go with it or not. So Flipkart Singapore में investment का decision भी Mr. X का था और Flipkart Singapore का share sale करने का decision भी Mr. X का. Then the other expression that other directors were in effect mere spectators or took advice from Mr. X. It is not coming out clearly why did they say that, but we can only draw the reasonable view basis this ki all the shots were being called by Mr. X and other directors who were even based out of Mauritius, they were not playing any key role in those decisions. Thereafter they said ki even if Mr. X was not present, then one of the representative of PE fund who are the residents of USA, they were present. And ultimately they said that other directors based in Mauritius were mere puppets and not independent. Revenue authorities further strengthened their argument by seeing what is the role of Mr. Y, who we observed in the diagram is the founder and partner of PE fund and is a US resident. Revenue authorities observed that जो Mauritius company के बैंक अकाउंट का ऑथोराइज सिग्नेटरी था और अगर बैंक उसका ऑथोराइज सिग्नेटरी मिस्टर वाई था, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होती है विच इज मोर देन $250,000, तो अगर एक थ्रेशोल्ड से ऊपर की कोई ट्रांजैक्शन मॉरिशस कंपनी करना चाहे तो उस ट्रांजैक्शन पे ऑथोराइज सिग्नेटरी मिस्टर वाई ही है या फिर कुछ उसके सीनियर मैनेजमेंट पर्सोनल अगेन बेस्ड आउट ऑफ यूएस. Whereas revenue authorities observed कि Mr. Y is neither on the board of Mauritius company, मतलब वो Mauritius company का director नहीं, and his presence is not noted on any of the minutes. Still, how come he has so much of control? Had this company been different from Mr. Y? They further observed that Mr. Y was not only authorized signatory of Mauritius company, he was authorized signatory of the immediate parent companies of the applicant. He was also the sole director of Ultimate Holding Company. So therefore, they concluded that it is Mr. Y who is bearing all the financial control over this Mauritius company. Also, they put forward a document. They placed a document before authority where it was contended that this is the document filed by Mauritius company before Mauritius regulators, which itself revealed that beneficial owner of the company was Mr. Y. So ultimately, they said that ultimate owner and management and control rests with you, Mr. Y, or his other counterparts, say Mr. X, or other senior management personnel in USA. The people based out in Mauritius were mere puppets. So therefore, Mauritius में कोई substance नहीं है. It is a conduit company just created for tax avoidance. As far as beneficial ownership का concept है, ये बहुत important concept है कि what is a beneficial ownership. तो इसको हमने briefly discuss किया है appendix में. Beneficial ownership के लिए beneficial owner ये कहीं defined नहीं है. We can only take view from various case law. What beneficial ownership is? One who is free to decide whether to invest or not to invest,
what to do, and how to use the yields from that investment. मतलब हो सकता है he may not be the legal owner, लीगली हो सकता है उन शेयर्स का मालिक मॉरिशस हो, लेकिन अल्टीमेटली देखना है क्या मॉरिशस कंपनी रियल ओनर भी है, मतलब वो सारे डिसीजंस को ले रहा है या नहीं ले रहा, तो इट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द लीगल ओनर. So this is again a substance over form concept, which revenue authority try to say the beneficial owner is not Mauritius, rather it is a US company. And US company had ultimate management and control on Mauritius. Then let's move on to arguments. We are not sure if these were the only arguments of applicant or ruling में सारे captured नहीं. जो ruling में captured है, on the basis of that, what applicant contended first is that it said I am doing tax planning, not tax avoidance. What I have done is on the basis of network of tax treaties which India has entered with Mauritius. And I'm not doing nothing. I'm just enabling myself to earn a competitive after tax return. उन्होंने बोला कि हम अपना टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं और वो टैक्स प्लानिंग भी कर रहे हैं क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ मॉरिशस इंडिया इनकम टैक्स ट्रीटी जो इंडियन गवर्नमेंट ने खुद डिजाइन करी है, एंड वी आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ अवॉइडेंस, वी आर जस्ट डूइंग टैक्स प्लानिंग. फर्दर दे सेड कि जहां तक डिसीजंस की बात है, it is solely taken by directors in Mauritius after proper discussions and deliberations. What these discussions and deliberations were, and are they actually substantial or not? It has not been discussed anywhere. As far as observation of role of Mr. Y is concerned, applicant said that this is a very limited authorization, and it is very insufficient to prove that Mr. Y has a control. Similarly, the disclosure we made before Mauritius law is also not sufficient. It does not nowhere says that the shares of Flipkart Singapore are controlled by US company. So ultimately, they said that Revenue Authority have not given sufficient evidences, and we have done this only within the four limbs of tax laws. Now let's see what AAR said. First of all, AAR made it very clear that we have to see the entire transaction. The entire transaction is relevant to see whether we intend to avoid tax or not. So they said what would be relevant is who has the control and management and who are the real owners. So clearly, if we see these arguments, how it appears is that appellant has not been able to put forth his argument. Revenue has given so much of factual detail that actually show that ultimately all the ownership and control related decisions are being taken by Mr. X or Mr. Y or someone who is sitting out in USA, but for sure no one based out of Mauritius. And therefore, authority observed that we find no justification why have you authorized Mr. Y. And Mr. Y, authorization of Mr. Y is not just a mere coincidence. He is a big man there. He's a beneficial owner of all games. He's an authorized signatory director of ultimate company. But it is evident that all your entire fund is actually being controlled by Mr. Y, and the opening of companies in Mauritius is just a sham. And therefore, it followed all the arguments of revenue and said that the investment you have made from Mauritius in India was just one of the investment, and you are not earning any revenue. You have no other business activity from where we can see why you invested to Mauritius, or from where we can see Mauritius had a good role to play. Ultimately, they said Mauritius is nothing but a see-through entity or a pass-through entity with its head and the brain being situated in US. And it concluded that application has been designed prima facie for avoidance of tax and therefore liable to be rejected. So this was the decision based on pure facts, how SSC and revenue played forward its argument, and on the basis of designed for avoidance of tax. But the ruling does not stop here. While giving their ruling at the very second last paragraph, the authority sparked some of the observations which opened the Pandora box of questions. While authority rejected the application, it was not obligated to comment on the tax liability, but still it gone ahead and discussed whether this transaction was otherwise taxable under the treaty or not. What authority said that here the shares under sale are of Singapore company and not of Indian company, and said as per tax treaty, the benefit under tax treaty is only available to the shares of Indian company and not Singapore. Before this, let's read the provisions of tax treaty.
then we will be able to appreciate. So this is the Article 13 of India-Mauritius Tax Treaty. It lays down into around 5-6 paragraphs. Each paragraph deals with different kind of asset. Para 1 deals with immovable property. Para 2 deals with movable property. Para 3 deals with ships and aircraft. Clearly above 3 paragraphs not applicable because हमारा case है sale of shares. Then come para 3A. Reading it out. Gains from alienation of shares acquired on or after 1st April 2017 in a company which is resident of a contracting state may be taxed in that state. मतलब अगर एक मॉरिशस कंपनी इंडियन कंपनी के शेयर्स बेचती है जो उसने 1 अप्रैल 2017 से पहले 17 के बाद एक्वायर करे तो वो इंडिया में टैक्स. Then para 3B. However, the tax rate on gains referred to in para 3A of this article and arising during the period beginning on 1st April 17 and ending on 31st March 19 shall not exceed 50% of the tax rate applicable on such gains in the state of residence of the company whose shares are being alienated. 3B देखा जाए बस 3A के लिए ही एक एक्सेप्शन कार्व आउट कर रही है जो बोलती है कि अगर आपने वो गेन आपको अर्न हुआ है 2 साल के लिए 1 अप्रैल 17 से लेके 31 मार्च 2019 तक के, तो जो भी आपको गेन हुआ है हम उस पर जो टैक्स बनता है हम उसका 50% टैक्स रेट चार्ज करेंगे. एक तरह से ये गवर्नमेंट की तरफ से बस 2 साल के लिए एक विंडो है. अगर आप इन 2 साल में गेन अर्न करते हैं तो हम आधा टैक्स करेंगे 31 मार्च 2020 पूरा टैक्स. लेकिन एक ऑफ इंडिया, तो अगर हम इसको पढ़ें, अगर मॉरिशस कंपनी इंडियन कंपनी के शेयर बेचती है जो उसने 1 अप्रैल 17 के बाद एक्वायर करे तो फिर टैक्सेशन इंडिया में होगी. एज वी ऑल नो हमारे केस में क्या है, मॉरिशस कंपनी ने 0.1 सिंगापुर कंपनी के शेयर बेचे, इंडिया के नहीं बेचे. 0.2 वो शेयर उसने एक्वायर करे थे 1 अप्रैल 2017 से पहले, 17 के बाद नहीं. देन कमिंग टू पैरा 4. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paras 1, 2, 3 and 3A shall be taxable only in the contracting state of which the alienator is resident. Now this is a very important para. सबसे पहले इस पैरा की एप्लीकेबिलिटी देखते हैं. Gains from alienation of any property other than that referred above. मतलब ये पैरा बहुत ओपन एंडेड है, ये सारी प्रॉपर्टीज कवर करता है, कोई भी प्रॉपर्टी जो ऊपर के 4 पैरा में नहीं है और वो टैक्सेबल, अगर उससे कुछ गेन हो रहा है वो कहाँ पे टैक्सेबल होगी, जहाँ पे उस प्रॉपर्टी का एलियनेटर मतलब ट्रांसफरर रेसिडेंट है. तो अप्लाइंग दिस इन आवर केस, अगर मॉरिशस शेयर और वो ऊपर के पैरा में अप्लाई नहीं हो रहा तो फिर अंडर वो मॉरिशस में ही टैक्सेबल होना चाहिए, इंडिया में टैक्सेबल नहीं होना. ये आर्टिकल 13 की रीडिंग. बट हाउ AAR रीडेड दिस. AAR सेड कि पैरा 4 ओनली कवर्स द केसेस ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन. उन्होंने प्रॉपर्टी को बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दिया. उन्होंने बोला अगर इंडिया के शेयर्स बेचे होते तो फिर पैरा 4 लगता, क्योंकि इंडिया के शेयर्स नहीं बेचे, आपने सिंगापुर के शेयर्स बेचे तो पैरा 4 लगेगा ही नहीं. तो एक तरह से ट्रीटी में जो एग्जेम्पशन दी है वो आपको मिलेगी नहीं. लेट्स रीड आउट द रेलेवेंट पैरा ऑफ दिस डिसीजन. पैरा 48, ऑलमोस्ट very last para of this decision. I am reading it out. In view of the foregoing, we are of the considered opinion that the issue involved in the question raised in the present applications was designed prima facie for avoidance of tax. ये हमने पिछले slide में cover कर. The applicants have contended that the shares of Singapore company derived their value substantially from assets located in India, and therefore it was eligible to take benefit of Article 13(4) of India-Mauritius Tax. ठीक है, एप्लीकेंट ने बोला आर्टिकल 13(4) हमें मिलना चाहिए और इसलिए ये इंडिया में टैक्स नहीं होगा. Then even if the Singapore company derived its value from the assets located in India, the fact remains that what the applicants has transferred was shares of Singapore company and not that of the Indian. ये बिल्कुल फैक्ट है, हम भी मानते हैं शेयर सिंगापुर के ट्रांसफर हुए हैं, इंडिया के नहीं. Now most important, the objective of India-Mauritius Treaty was to allow exemption of capital gains on transfer of shares of Indian company only, and any such exemption on transfer of shares of the company not resident in India was never intended by the legislature. जो बोल्ड और अंडरलाइन वाला टेक्स्ट है
ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है एंड अनफॉर्चुनेटली AAR ने ये ऑब्जर्वेशन तो दे दी, इसके पीछे कोई प्रॉपर एक्सेप्ट उन्होंने जो प्रोटोकॉल आया था मॉरिशस ट्रीटी का उसको रीड आउट किया है, बट वो रीडिंग जो उन्होंने बहुत ही पार्टली रीडिंग की। तो अल्टीमेटली AAR बोलता है कि अगर आपने इनडायरेक्ट ट्रांसफर कर रहे हो, मतलब आप इंडिया का शेयर नहीं बेच रहे, सिंगापुर के बेच रहे हो, तो मॉरिशस ट्रीटी उसको कवर ही नहीं करेगी, तो इसलिए आपको ट्रीटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। Now, this particular observation raises so many questions and kind of unsettled. Also, one more thing, there is a circular number 789, which is there in the case of India Mauritius Tax Treaty. इस रूलिंग में अथॉरिटी ने ये भी बोला कि ये सर्कुलर तभी एप्लीकेबल होगा जब आपने इंडियन कंपनी के शेयर बेचे। हमें सर्कुलर को भी डिस्कस। Now, before this circular, let's move on to what is the issues now which posed by this authority. अथॉरिटी ने पैरा 4 को इस तरह पढ़ा, उन्होंने प्रॉपर्टी का मीनिंग उन्होंने बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया कि प्रॉपर्टी ओनली इंक्लूड शेयर्स ऑफ इंडियन। बट अगर हम देखें सिमिलर केस पहले ही कोर्ट्स ने टेस्ट कर चुके हैं और फेवर में व्यू दे रखी है, एंड कोर्ट्स इंक्लूड आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट इन द केस ऑफ सनोफी पास्चर. This is a very detailed decision running into hundreds of pages, and where the courts specifically dealt with the India's France treaty, which was similarly worded with India Mauritius treaty, and वहाँ पे भी फ्रांस कंपनी के शेयर्स बेचे जा रहे थे, which was deriving its value from India. कोर्ट्स ने स्पेसिफिकली बोला था कि अगर इनडायरेक्ट ट्रांसफर जो केस है, अगर वो स्पेसिफिक पैरा में नहीं आ रहा, देन यू हैव टू अप्लाई रेसिडुअल पैरा एंड टैक्स अकॉर्डिंग टू रेसिडुअल पैरा. तो इस केस में कोर्ट ने बोला अगर पैरा 3 आपका पैरा 4 अप्लाई कर रहा है, और इस केस में अगर अप्लाइंग सनोफी पास्चर डिसीजन पैरा 4 के हिसाब से टैक्सेशन मॉरिशस में हुई. Similar case was also interestingly authority itself in its own decision of GEA refrigeration around 2 years back have given same view as Sanofi pasture. Authority itself has said that you have to apply residual para and therefore it should not be taxed in. This decision of GEA refrigeration was in the case of German treaty, but logic applied by authority in the Andhra Pradesh High Court were very much similar and very much detailed, which said that you have to apply residual para. But unfortunately, this decision of AAR nowhere deals with these decisions, nowhere discusses why it has contradicted the meaning of property. It only observes that property will only include shares of Indian companies. This was the first and foremost issue raised by this decision. And now, going forward, we need to be cognizant of this fact to how far we have to apply this decision of authority and how to contradict this with the Sanofi pasture decision. The next, which I just discussed few minutes back, applicability of circular 789. तो सर्कुलर नंबर 789 है, ये 2000 का सर्कुलर है, which is specifically for capital gain derived by Mauritius resident under India Mauritius tax avoidance agreement. इसमें CBDT ने क्लैरिफाई ये किया है, हम पैरा 2 का जो बोल्ड टेक्स्ट है वो पढ़ते हैं, that wherever a certificate of residence is issued by Mauritius authority, such certificate will constitute sufficient evidence. CBDT ये कहती है कि अगर मॉरिशस रेसिडेंट के पास एक रेसिडेंसी सर्टिफिकेट रेसिडेंस है, तो हम ये मान लिया जाएगा कि वो बेनिफिशियल ओनर है मॉरिशस और अकॉर्डिंग उस कंपनी का, एंड अकॉर्डिंग वाइल ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट जो है वी शुड गो बियॉन्ड दिस और, बट ये टॉपिक ऑफ डिबेट नहीं है. टॉपिक ऑफ डिबेट ये है पैरा 3 ऑफ दिस सर्कुलर, जहाँ पे बोल्ड टेक्स्ट है accordingly FIIs मतलब foreign institutional investors या कोई भी non resident which are resident in Mauritius would not be taxable in India on income from capital gain arising in India on sale of shares as per para 4 of article 13. अगर हम इस पैरा को पढ़ते हैं, ये कहीं भी ये नहीं बोलता कि पैरा 4 ऑफ आर्टिकल 13 सिर्फ इंडियन कंपनी के शेयर्स पे लगेगा. ये बोलता है सेल ऑफ शेयर्स, बस शेयर्स पे रिस्ट्रिक्ट करता है. शेयर्स कौन सी कंट्री होंगे, वेयर जब हम अथॉरिटी का डिसीजन पढ़े, अथॉरिटी बोलती है कि ये सर्कुलर एप्लीकेबल इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये सर्कुलर सिर्फ इंडियन कंपनी के शेयर्स पर ही एप्लीकेबल होता है. दिस इज अनदर controversy which has been created by this authority decision that is further utilizing the doubt on applicability of circular number 789, which was earlier claimed. Another controversy, application of judicial precedence of tax planning versus tax avoidance applied by Azadi Bachao and Vodafone.
यहाँ पे वोडाफोन ने क्लियरली बोला कि हमें सी थ्रू नहीं लगाना, हमें लुक एट अप्रोच लगानी है, एंड अकॉर्डिंगली हमें टैक्स प्लानिंग और टैक्स अवॉइडेंस को उस हिसाब से डील करना है। अनदर कंट्रोवर्सी इज गार। इन इनकम टैक्स लॉ अंडर डोमेस्टिक प्रोविजन गार हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, बट एट द सेम टाइम गार में ग्रैंड फादरिंग दे दी गई है। गार बोलता है जो भी शेयर्स आपने 1 अप्रैल 2017 से पहले एक्वायर करे उन पे हम गार नहीं लगाएंगे। बट अगर देखा जाए इस केस में अथॉरिटीज ने गार ही लगाया, विच इज नॉट अ लीगल गार बट अ जुडिशियल गार। तो द क्वेश्चन which is now question which raises is why we have a specific guard provision जो स्पेसिफिकली बोलता है 1 अप्रैल 2017 से पहले नहीं लगेगा। क्या स्टिल आप जुडिशियल गार 1 अप्रैल 2017 से पहले लगा सकते हो, एंड बेसिस दैट यू कैन से दैट you this is a tax avoidance and you cannot claim the treaty benefit. So these are the few questions which have now been opened because of this particular paragraph of this authority, and this is no doubt going to have a far-reaching implication in any case of indirect transfer. And we know practically in our daily life, we are actually dealing with indirect transfer case more than the case of direct. So this is all from me. These are the two decisions I wanted to discuss with you. Now I'm open for the questions. Thank you. निशांत भैया, मुझे ये जो केस लॉ है जो आपने बताया 789 में, मुझे तो मेजर दिक्कत इसमें क्या नजर आ रही है, मोटा मोटा आप ओवरऑल फील करोगे कि अगर आप आज़ादी बचाओ आंदोलन केस पढ़ोगे या फिर अगर आप केस पढ़ोगे यू विल अगर आप केस पढ़ेंगे अपना जितने भी केस लॉस आप बात करते हैं वहां पे सबसे पहला आर्गुमेंट जो डिपार्टमेंट ने दिया था इन फेवर आज़ादी बचाओ आंदोलन, वन ऑफ द थिंग कि सर जो आप इसका प्रियम्बल पढ़ोगे तो प्रियम्बल में इसका टारगेट क्या है, द प्रियम्बल से समथिंग दैट डेवलपिंग इकोनॉमिक रिलेशन विद द स्टेट। उन्होंने बोला अगर कोई व्यक्ति अगर मॉरिशस से आ रहा है तो हमारे रिलेशंस की रिलेशंस डेवलप हो रहे हैं, ये इट इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ द प्रियम्बल। दैट इज व्हाई पीपीटी टेस्ट अगर जहां पे हम पीपीटी टेस्ट की बात करते हैं वहां पे भी दिक्कत ये आ रही है, आप समझे बात। उससे भी दो मॉरिशस ने एमएलआई साइन किया, तो जहां पे इस तरह की बात लिखी जा रही है और वहां पे एमएलआई साइन है और पीपीटी फेल हो रहा है, तो व्हाट आई वांट टू से इफ समथिंग इज डन एज पर डीटीएए जो आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज लिखे हुए हैं तो 789 में तो दिक्कत आनी नहीं चाहिए मॉरिशस के केस में, एटलीस्ट मैं ये कह रहा हूं। बिल्कुल जी 789, हाँ मैं बिल्कुल समझता हूँ। तो 789 जिस तरह वर्डेड है ये काफी हद तक दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बट हम पास्ट में भी देखें तो चाहे हमारे हाईकोर्ट के डिसीजन थे आदित्य बिरला नोवो वाले या फिर जो रिसेंटली एबी मॉरिशस के केसेस आए, सब में कोर्ट्स हैव एक्चुअली गॉन फार एंड कोर्ट हैव सेड कि ये जो सर्कुलर है जो टीआरसी को सैक्रोसेंट बना रहा है, दिस इज नॉट एक्चुअली द कंप्लीट सॉल्यूशन। हमें टैक्स अवॉइडेंस पे तो फिर भी जाना पड़ेगा, और ये अलग डिबेट है जो सुप्रीम कोर्ट ने आज़ादी बचाओ में बहुत 789 में उन्होंने बहुत समरली वे में क्लैरिफाई कर दिया था कि 789 विल बी सैक्रोसेंट, बट व्हाई हाउ वी हैव टू डील विद इट अकॉर्डिंग टू टैक्स अवॉइडेंस वो सुप्रीम कोर्ट ने भी डिस्कस नहीं किया, एंड दैट्स व्हाई इट इज अ ओपन क्वेश्चन कि 789 का हम किस हद तक यूज कर सकते हैं। बट जो ये डिसीजन है ये एक लेवल और आगे चला गया कि 789 विद इन 789 इसने एक और क्वेश्चन डाल दिया कि हम टैक्स अवॉइडेंस में तो जा ही नहीं रहे, हम बोल रहे हैं सिर्फ इंडियन कंपनी के शेयर्स पे कवर, मतलब 789 इनडायरेक्ट ट्रांसफर को कवर नहीं कर। ठीक है, तो भैया वैसे भी अगर मैं इंटरनेट ट्रांसफर की बात भी करूं और वोडाफोन की बात भी करूं, कहीं पे तो ये भी लिखा हुआ है अगर जो चीज डिफाइंड नहीं है और जैसे शेयर्स इज नॉट डिफाइंड एज पर द, अगर मैं थोड़ा एक्सट्रीम की बात करूं दोज एक्सप्रेशन इज नॉट एप्लीकेबल टू डीटीएए, बट द एसएससी कैन आर्ग्यू दिस टाइप ऑफ दिस थिंग कि भैया शेयर आपने डिफाइंड नहीं किए। अब वोडाफोन के केस के बाद एक्सप्रेशन 4, 5, 6 लग गया, जहां पे आपने 911 की तरह बोला भैया ये जो अंडरलाइंग एसेट्स जहां पे होंगे ना भैया वो शेयर वहां का नहीं माना जाएगा, यहाँ का माना जाएगा। जहाँ पे आपको याद होगा 2015 में बात सर्कुलर आया था कि भैया दिस इज नॉट इन कंटेक्स्ट ऑफ डिविडेंड, ठीक है सर। तो डिविडेंड के लिए उन्होंने दिक्कत हटा दी थी, फिर बाद में एक स्पेशल 7 और जोड़ दी थी इन्होंने, चाहे उन्होंने बोला भैया कि इस लिमिट से कम 10 करोड़ से ऊपर और 2% और वो 3-4 कंडीशन डाल दी थी ताकि हम छोटी छोटी ट्रांजेक्शन में ना जाए, राइट। तो व्हाट आई वांट टू से दैट द एसएससी कैन आर्ग्यू कि एक तरफ आप बोल रहे हो जहाँ पे अंडरलाइंग एसेट्स है वो तो इंडिया का शेयर है, कोई मान लीजिए कोई सिंगापुरी कंपनी है और वो कंपनी है वो अंडरलाइंग एसेट्स के इंडिया में, तो आप एक्ट के हिसाब से तो कह रहे हो कि ठीक है मैं शेयर्स की डेफिनेशन के एक्ट के हिसाब से उठा सकता उस हिसाब से कह रहा है कांट ऐसे नहीं। तो आप जब वो कह रहा है कि भैया डीटीए में जो शेयर होना चाहिए वो इंडिया का होना चाहिए, तो कहना है आर्ग्यू लाइक दिस
कि भैया वो जो अंडरलिंग एसेट्स जो वहाँ पे आ रहे हैं, तो एज पर 911 ये शेयर मानना चाहिए वहाँ का। मैं ही कह रहा हूँ, कह रहा है कांड यार बोले अ, वो आर्ग्यूमेंट थोड़ा मुझे डिफिकल्ट लग रहा है, और वो इसलिए क्योंकि एक्ट में देखा जाए ना, एक्ट में सेक्शन 9 में एक्सप्लेनेशन 5 के थ्रू लॉ ने बहुत क्लियरली बोला कि वो सिंगापुर कंपनी का शेयर माना जाएगा कि इंडिया में सिचुएटेड है, लेकिन ट्रीटी में इनडायरेक्ट ट्रांसफर स्पेसिफिकली डिस्कस नहीं किया। तो इसलिए कोर्ट्स अपनी ही एनालॉजी लगा के उसको डिस्कस कर रही है, लेकिन एक्ट में वो वाली एनालॉजी लगाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि एक्ट में देयर इज स्पेसिफिक प्रोविजन जो बोलता है सिंगापुर का शेयर इंडिया में मान लिया जाए। ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है। Can we, can I allow her? अगर मैं उनको अलाउ कर दूँ एक बार? या प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ, सर आई बिलीव शी लेफ्ट। कोई दिक्कत नहीं सर, आप आगे शुरू कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आप आगे कर लो सर, आप आगे दूसरे केसेस कर ले, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, आई थिंक मेरी तरफ से यही था, क्वेश्चन आंसर्स दे सकते हैं। तो दो ही केस लॉस हमने करना है भाई। हाँ जी। व्हाट्सएप 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 यू आर देयर? Yes, sir. यस। Yes. हाँ, तो लेट अस डिस्कस। किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो वो डिस्कस कर लेते हैं। अगर भैया जैसे एक तो ये फ्लिपकार्ट का टाइगर वाला केस कर लिया आपने, और एक पिलकॉम का कर लिया, अब क्या मतलब अदरवाइज अगर हम बात की और कुछ इश्यूज की बात करें, व्हाट आर द मेन इश्यूज व्हिच इज कमिंग अप, एटलीस्ट मतलब नॉट इन केस लॉस टर्म्स, पर अदरवाइज व्हाट इज हैपनिंग ऑल अराउंड? एमएलआई आ गया, एमएलआई इज ऑलरेडी बीन अराइव्ड, राइट? 1/4/2020 से लग गया। तो व्हाट आर द मेजर इश्यूज टू बी टेकन केयर ऑफ व्हेन हम इंटरनेशनल की अगर बात करते हैं, तो क्या क्या इश्यूज ऐसे हो सकते हैं कि जहां जहां पे एसएससी को बीइंग पेयर, पेई की तो बात ही नहीं करेंगे, पेई में तो बहुत सारे कंटेक्स्ट है, क्योंकि एमएलआई की वजह से पी की बहुत सारे चीजें चेंज हो गई, जो हमने पीछे डिस्कस भी किया था कि जहाँ पे आपका एजेंसी मॉडल है, तो अगर आपका एजेंसी मॉडल आप 2018 की अमेंडमेंट आप एमएलआई में भी हिट कर रही है, तो ऐसे केस में आपको ट्रेडिंग मॉडल में शिफ्ट कर देना चाहिए। ऐसे ही अगर मान लीजिए अगर आपका से एजेंट आप वैसे बन रहे हैं बहुत सारी एंटिटीज का, वो एक ग्रुप एंटिटी है, तो उसके अंदर आपको ट्रेडिंग मॉडल में शिफ्ट कर देना चाहिए, राइट? तो एक लाइसेंस जी जी। ऑफिस वाला ऑल्सो हमें देखना चाहिए। तो व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू बी टेकन केयर ऑफ? अगर हम मैं अब 195 की बात करूं, टीडीएस काटने की बात करूं, तो मुझे क्या क्या ध्यान रखना है कि भाई 195 के अंदर कि भाई ये पेपर्स ले ले, एटलीस्ट तू 201 की लाइबिलिटी से बच जाएगा। आई एम नॉट अबाउट वर्सेस 3 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि भैया तू अगर तू ये पेपर्स ले लेगा तो एटलीस्ट 201 में तेरे को दिक्कत नहीं, प्रोफेशनल नेग्लिजेंस नहीं हो। दैट इज इट। नहीं बिल्कुल ठीक है नितिन जी, और ये काफी एरिया ऑफ कंसर्न है। पहले मैं कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स के बारे में बात करता हूँ, फिर इस वाले क्वेश्चन पे आऊंगा। तो अगर मैं रीसेंट डेवलपमेंट्स बताऊं, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो दो तीन जो मेरे दिमाग में आ रही, पहली है डिविडेंड टैक्सेशन। जब से 1 अप्रैल से डिविडेंड का सारे टैक्सेशन रिजीम बदला है, अब डिविडेंड, अब हर नॉन रेसिडेंट टैक्स ट्रीटी का बेनिफिट लेना चाहता है, जिसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है बेनिफिशियल ओनरशिप, जो भी हमने टाइगर वाला डिसीजन पढ़ा। तो अब मैक्सिमम असेसीज जो नॉन रेसिडेंट हैं, अब वो ये क्योंकि मैक्सिमम ने टैक्स फ्रेंडली जुरिस्डिक्शन में के थ्रू होल्डिंग करी है, so now they are trying to build up their documentation and trying to see whether actually they are beneficial owner or not, and they are therefore they are liable for eligible for treaty benefit or not. ये सबसे पहला पॉइंट है जो काफी टैक्स पेयर्स इंटरेस्टेड। दूसरा पॉइंट है इक्वलाइजेशन लेवी। ये अपने आप में बिल्कुल ही नया regime है जो 1 अप्रैल 2020 से एप्लीकेबल हो चुका है, और ये रिजीम बहुत ही हश हश में इंडियन सरकार ने इंट्रोड्यूस किया 24 मार्च 2020 को, जब अमेंडमेंट टू फाइनेंस बिल 2020 लाए, उसमें इन्होंने फर्स्ट टाइम इक्वलाइजेशन लेवी का प्रोविजन, जो नया इक्वलाइजेशन लेवी वो इंट्रोड्यूस किया। क्योंकि पहले जो इक्वलाइजेशन लेवी था वो काफी कम स्कोप का था, रिस्ट्रिक्टेड स्कोप था। अब जो इक्वलाइजेशन लेवी है उसकी बहुत ही वाइड एम्बिट और बहुत वाइड रेंज, इसने एक्चुअली पूरे मल्टीनेशनल सिनेरियो में काफी हलचल क्रिएट कर दी। अगर मैं इक्वलाइजेशन लेवी का ऑडियंस के लिए ब्रीफ बैकग्राउंड बताऊं, तो इक्वलाइजेशन लेवी is a kind of digital taxation which has been introduced pursuant to OECD BEPS program, BEPS Section Plan 1। तो क्या हो रहा था, OECD was concerned कि अभी तक जितना भी हमारा टैक्स ट्रीटी फ्रेमवर्क है वो नॉर्मली फिजिकल ट्रांजेक्शन्स पे ज्यादा बेस्ड हो। वो बोलता है अगर एक फॉरेन कंपनी है उसने इंडिया में आके काम किया, फिजिकली आके, तब उसकी इनकम इंडिया में टैक्स होगी, नहीं तो नहीं होगी। आज के जमाने में हम देखते हैं कि डिजिटल एडवांसमेंट इतनी हो गई है कि फॉरेन कंपनी को इंडिया में आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारे लिए अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, या फ्लिपकार्ट तो नहीं बोलूंगा, अमेजॉन यूएस कंपनी है, बाहर से ऑपरेट करती है,
इंडिया में उन्होंने बस एक मार्केट सपोर्ट सेंटर क्रिएट किया है, बाकी सारे प्रॉफिट्स बाहर जाते हैं क्योंकि कस्टमर्स इंडिया में है, मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में है। चल अमेजोन यूएस एक फॉरेन कंपनी है, यूएस में आती, इंडिया में आती भी नहीं है फिजिकली, चल उसकी इनकम सारी एग्जाम्प हो जाती। या फिर आजकल जो हमारे ओटीटी मॉडल्स में, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, हॉटस्टार हो, कलर्स हो, ये सारे फॉरेन कंपनी। ओके, इंडिया में इनकी इतनी वाइड रीच है, इंडिया में सारे इनके चैनल्स ब्रॉडकास्ट होते हैं। चल इंडिया में इनकी कोई टैक्सेशन नहीं होती, क्यों नहीं होती? क्योंकि फिजिकली नहीं आते हैं, सब बाहर से ऑपरेट करते हैं। और अकॉर्डिंगली देयर वाज अ ह्यूज डिसरप्शन, जहाँ पे सारी टैक्स डेवलपिंग कंट्रीज में, स्पेशली मैं बोलूंगा क्योंकि सारी कंपनीज डेवलप्ड कंट्रीज के लिए होते हैं, मुझे अपनी यूएस कंपनी, जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, दे केम फॉरवर्ड एंड दे काइंड ऑफ कंप्लेंट कि ऐसे हमारा रेवेन्यू लॉस हो, यू आर एक्चुअली रिपिंग द बेनिफिट्स फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज एंड स्टिल नॉट पेइंग एनी टैक्स। तो इसके चलते ओईसीडी ने एक बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग का प्लान निकाला, जिसके अंडर उन्होंने इक्वलाइजेशन लेवी एक एक वन ऑफ द पार्ट ऑफ दैट बेप्स प्रोग्राम उन्होंने उसको इंट्रोड्यूस किया। और अंडर द बेप्स प्रोग्राम उन्होंने बोला ऐसे में एक डिजिटल टैक्स गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर सकती है। उन्होंने ओपिनियन, एक आइडिया दिया कि आप डिजिटल टैक्स इंट्रोड्यूस करो। तो परसुएंट टू दैट इंडिया में डिजिटल टैक्स फर्स्ट टाइम 2016 में आया था, जो बहुत ही लिमिटेड ट्रांजेक्शन पे एप्लीकेबल था। मेजरली ट्रांजेक्शन थी जो एडवर्टीजमेंट मॉडल होते हैं गूगल के या फेसबुक के, उनके लिए था। अब जो 2020 में आया है वो बहुत ही वाइड रीच है, जो कहता है कि अगर कोई फॉरेन कंपनी है वो ऑनलाइन बेसिस पे इंडिया में अपने गुड्स और सर्विसेज बेच रही है या बिकवा रही है, तो फिर उसकी इनकम जो उसको इंडिया से रिसीव हो रही है कंसिडरेशन, उसका 2% उसको इंडियन सरकार को जमा करना होता है। ये लेवी जिस तरह आई है, इतनी वाइड तरह से वर्डेड है, इसमें अपने आप में बहुत इशू है। और अगर हम इसको देखें, इसकी बहुत इम्प्लीकेशन है कि कैसे एप्लीकेबल हो। छोटा सा एग्जाम्पल है कि आप कैसे कह सकते हो कि गुड्स या सर्विस ऑनलाइन दी गई है। एग्जाम्पल लेता हूँ, क्या अमेजोन वाला केस, अमेजोन ने ऑनलाइन अपनी सर्विस दी है मार्केट प्लेस। दूसरा केस लेता हूँ अर्बन क्लैब, अर्बन क्लैब को सर्विस नहीं दे रहा, वो बस फैसिलिटेट कर रहा है, सर्विस ऑनलाइन नहीं आ रही। सर्विस आपके घर पे उसका बंदा इंडिया में आपके घर पे आके दे रहा है फिजिकली, लेकिन वो बस ऑनलाइन बेसिस पे रन कर। आपके पास मेक माई ट्रिप का एग्जाम्पल है, सर्विस आप होटल की या फ्लाइट की फिजिकली जाके ले रहे हैं, मेक माई ट्रिप की बस सर्विस आप ऑनलाइन ले रहे हैं। आपके पास ऐसे न्यूमरस एग्जाम्पल है। तो हर केस में कैसे इसकी एप्लीकेबिलिटी होगी, ये बहुत ही ओपन क्वेश्चन है और इसके ऊपर बहुत सारी केस स्टडी भी बन सकती है। तो एक इक्वलाइजेशन लेवल पे काफी डिस्ट्रप्शंस आई हैं, जो एट टाइम्स हमारे पास काफी एसएससीज, काफी टैक्स पेयर्स आती हैं कि वेदर उन केस में इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा या नहीं लगेगा। और अगेन इससे फिर एक और डिस्ट्रप्शन है ये, अगर इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा तो फिर क्या वो इनकम अदरवाइज इंडिया से एग्जाम्प्ट हो जाएगी? तो उस पर अलग इशू है, क्योंकि अदरवाइज उस पर रॉयल्टी या एफटीएस का इशू बनता था, वो एक अपने आप में बहुत सेपरेट टॉपिक है। उसके अलावा जो डिस्ट्रप्शन है ये, जैसे आपने बताया एमएलआई की, एमएलआई से काफी डिस्ट्रप्शन आई है। उससे एमएलआई अगेन मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट, जो ओईसीडी बीईपीएस प्रोजेक्ट के परसुएंट एक इंस्ट्रूमेंट साइन किया गया है सारी कंट्रीज से, जिसमें इंडिया भी पार्टी है। परसुएंट टू एमएलआई मैक्सिमम ट्रीटीज इंडिया की चेंज हो गई है, अराउंड 104 में से 47 ट्रीटीज करंटली चेंज हो चुकी है। और एमएलआई से काफी ट्रीटीज में जो अभी तक के प्रोविजंस थे, जो टैक्स पेयर्स जिसको सरकमवेंट कर पाते थे, अब उसकी उनकी जो सरकमवेंट करने की जो क्षमता है वो काफी कम कर दी गई। जो वो लूपहोल्स निकाले हुए थे उसको उन्होंने प्लग कर दिया। वन ऑफ द लूपहोल्स वाज पी, एजेंसी पी, जैसा भी हम डिस्कस करें। तो एजेंसी पी का अभी तक काफी अलग से वो काफी वो सरकमवेंट हो रहा था, एजेंसी पी नहीं बन पा रही थी, तो एमएलआई से काफी चेंज हो। तो ओवरऑल काफी डिस्ट्रप्शंस हैं जो हम डिटेल में और भी डिस्कस कर सकते हैं। निशांत भैया, एज फार एज आपने जो उसका बताया, दो चीजें इक्वलाइजेशन लेवी में जो मुझे लगा, पहली बात तो इक्वलाइजेशन लेवी इज नॉट एप्लीकेबल टू नॉर्मल कंज्यूमर लाइक मी एंड यू। व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अगर गौर साहब ई कॉमर्स, कहीं गलती हो तो बता देना भैया, अगर गौर साहब ई कॉमर्स कर रहे हैं तो इट इज एप्लीकेबल टू हिम एक्चुअली। अब होता क्या था, जब पहले इक्वलाइजेशन लेवी आया था तब 6% एसएससी ने जमा कराने थे, राइट? अब नाउ गौर साहब हैज टू चार्ज सिंस ही इज रनिंग ई कॉमर्स, राइट? So one thing, due to MLI, one is the major thing which is going to come up. जहाँ पे MLI साइन हो गया है, वहाँ पे क्या होगा भैया, बेसिकली जहाँ पे आप वेयर हाउस मेंटेन कर रहे हो, जहाँ पे वेयर हाउस मेंटेन कर रहे हो, वेयर हाउस इज गोइंग टू बी कोर एक्टिविटी। और जहाँ पे वेयर हाउस, मान लो गॉड साहब इज अ जापानीज कंपनी, एग्जांपल इज ओनिंग अ जापानीज कंपनी, और ई कॉमर्स इंडस्ट्री है उनकी अपनी, राइट? तो ऑफिस बात है, अगर उन्होंने अपना वेयर हाउस यहाँ पे मेंटेन किया होगा
तो वो ऑलरेडी कोर एक्टिविटी बन जाएगा। और एमएलआई अगर इफेक्ट कर रहा हूँ, मैं मान के चलता हूँ एमएलआई से इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि एमएलआई इन्होंने भी साइन किया, मैंने भी साइन किया है, इन्होंने भी नोटिफाई किया, मैंने भी नोटिफाई किया, और सेम ऑप्शन हमने चूज किया। तो ऐसे केस में तो सर एमएलआई से तो इनकी वो जो पर्टिकुलर वेयर हाउस है वो आपकी पी बन जाएगी, पी सर्टिफिकेट। अदर देन दोस्त जहां पे पी नहीं बन पा रहा, जहां पे, या फिर एक तरीका ये है कि ये काम करे कि भैया वो जो वेयर हाउस है वो थर्ड पार्टी को दे दे, और उस थर्ड पार्टी के पास अपना कोई स्टाफ ना बैठाए फॉर सुपरवाइजिंग, क्योंकि अदरवाइज दोबारा फिक्स प्राइस पी बन जाएगा। अगर मान लो उन्होंने स्टाफ बैठा दिया, थर्ड पार्टी बोलो, मान लीजिए नितिन कन्वर है वहां पे, ठीक है जी, इन्होंने थर्ड पार्टी को दे दिया और आर्म्स लेंथ पे मुझे दे रहे हैं, मेरा काम सिर्फ इनका माल आता है और मुझे डिस्पैच करना है, राइट। तो ऐसे केस में इनका पी नहीं बन पाएगा, सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन इनका वो स्टाफ भी नहीं बैठा होना चाहिए टू सुपरवाइज, अदर फिक्स प्राइस पी बन जाएगा। मैं मान के चल रहा हूँ वो वाला केस हट जाएगा, या फिर दूसरा केस के अंदर जहां पे इक्वलाइजेशन लेवी की बात आपने करी है, यस इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट ई कॉमर्स इंडस्ट्री, बट हैविंग सेड दैट एज फार एज सर्विस इज कंसर्न, जहां पे ये बात ना हमने भैया कमलेश वाशन साहब से भी पूछी थी, तो राइट स्पोकन अबाउट दैट सब्जेक्ट। तो हमने ये बोला था कि मैंने कहा सर उस केस में रॉयल्टी और एफटीएस में क्या होगा, वो व्यक्ति 2% जमा कराएगा और यहाँ पे टीडीएस की लायबिलिटी 10% की है, राइट। तो उन्होंने बोला जी हमारी इंटेंशन नहीं है, दे विल गोइंग टू मेक सम चेंजेस और नथिंग चेंज हैज कम ओवर देयर। तो जो आपने पॉइंट एकदम बोला कि भैया ऑफिस बात है वो 2% जब जमा करा देगा सेक्शन 10 से प्लस 50 में तो एग्जेम्प्टी हो जाएगी इनकम, जब एग्जेम्प्टी हो जाएगी तो टैक्स कैसे लगेगा, राइट। 195 में टीडीएस कट ही नहीं पाएगा, 115 ये पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो जब तक वो क्लैरिफिकेशन नहीं आती, वो बहुत बड़ा रोल है, वो आप सही कह रहे हैं, बहुत वो पॉइंट दिक्कत आएगा। अब अगर आप डिस्कस, ठीक है, हाँ मैं यही बस बोल रहा था, इक्वलाइजेशन लेवी में गवर्नमेंट से हमारी एक्सपेक्टेशन यही है कि वो क्लैरिफिकेशन जल्दी से जल्दी इशू करे, क्योंकि देखा जाए तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ पेमेंट एक हफ्ते बाद ही आ रही है 7 जुलाई को, और अभी तक ना कोई क्लैरिफिकेशन नहीं, ना डेफरल की कोई नोटिफिकेशन नहीं, तो वो काफी जल्दी उस पर एक्शन की उम्मीद है। भैया अब थोड़ा सा 195 की कंटेस्ट समझा दें थोड़ा सा, कि 195 के अगर मुझे कोई 15 सी 50 सी भी साइन करना है तो मुझे क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है आज के सिनेरियो में, सो दैट कल को 15 सी भी इशू करते हुए हमें मतलब ऐसा ना हो कि प्रोफेशनल नेग्लिजेंस ना हो जाए किसी पर्पस जी 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 बिल्कुल। तो जहाँ तक 15 सीए की बात करता हूँ, 15 सीए तो कंपनी को अपने हिसाब से पार्ट ए बी सी डी करती है। मेन आते हैं 15 सीए पे, जो वहाँ पे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो जब हम किसी भी ट्रांजेक्शन के बारे में टीडीएस देखते हैं, देखो जिस तरह इस वक्त लॉ इवॉल्व कर रहा है, टीडीएस के टाइम पे थोड़ा सेफ प्ले या कंजर्वेटिव प्ले करना ही बेटर है, कंजर्वेटिव प्ले करना ही बेटर है, अनलेस आपकी वेंडर काफी ऑब्जेक्ट करता है या फिर आपको ग्रॉसिंग अप करके आप खुद ही बियर कर रहे हो। दैट इज फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, जहां तक नो पी सर्टिफिकेट की बात है, नो पी डिक्लेरेशन की, वो हम प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, नो पी डिक्लेरेशन ले लेते हैं या नो बिजनेस कनेक्शन डिक्लेरेशन ले लेते हैं और वहां का टीआरसी ले लेते हैं। अब हम पेमेंट और मोर इम्पोर्टेंटली नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन देखते हुए अलग अलग बकेट्स बनाते हैं। जहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन है, मान लो रॉयल्टी एफटीएस, वहां पे हमें ज्यादातर ट्रांजेक्शन पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि देखा जाए ट्रीटी में रॉयल्टी एफटीएस की डेफिनेशन ही इतनी ज्यादा स्कोप, इतना उसका लेस है कि वहां पे काफी चांसेस बन जाते हैं कि वहां पे टैक्सेशन ही ना हो। तो पहले अगर हमें ट्रांजेक्शन लेवल पे कंफर्ट है कि रॉयल्टी है तो कॉपीराइट वर्सेस कॉपीराइटेड आइटम, या एफटीएस है तो मेक अवेलेबल, अगर इस तरह की कंडीशन प्लस मुझे फॉरेन कंपनी है, हमें पता है वो सब्सटेंस है उसका वहां पे, वो कोई शैम कंपनी नहीं है, तो नो पी और टीआरसी के बेसिस पे हमें बेनिफिट दे देना चाहिए। अब यही अगर मैं दूसरा केस लूँ इंटरेस्ट या डिविडेंड का, वहां पे डेफिनेशन में ज्यादा फर्क नहीं है, अगर एक्ट में टैक्सेबल है तो ट्रीटी में भी नॉर्मली टैक्सेबल हो जाती है। वहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है बेनिफिशियल ओनरशिप, वहां पे आपका टीआरसी रेलिवेंट नहीं, आपको सिर्फ टीआरसी पे रिलाई नहीं करना चाहिए, आपको खुद अपनी कॉग्निजेंस के बेसिस पे देखना चाहिए कि एक्चुअली वो, और स्पेशली जहाँ पे मॉरिशस आ जाता है, केमेन आ जाता है, नीदरलैंड्स आ जाता है, सिंगापुर आ जाता है, स्पेशली इस तरह की कंट्रीज में आपको उस कंपनी से उससे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन लेनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन की भाई एक्चुअली आपका वहाँ पे सब्सटेंस है। मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊँ हम डॉक्यूमेंटेशन क्या ले सकते हैं, आपके वहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने, आपके वहाँ पे ओनर जो हैं, आप ऑब्वियसली ओनर की सारी डिटेल्स तो नहीं दे सकते, आपके जो ओनर्स हैं वो कहाँ के रेसिडेंट, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहाँ के रेसिडेंट, आपकी बोर्ड मीटिंग एक्चुअली कहाँ होती है, इस तरह की हमें डिटेल ले लेनी चाहिए। नॉर्मली एक तरह के ट्रांजेक्शन का ना जो क्वांटम होता है वो काफी ज्यादा होता है, तो एक्सपोजर भी ज्यादा बन जाता है।
So at times, depending on our negotiation power and our relationship with that person, हमें उससे indemnity भी ले लेनी चाहिए, हमने उससे टैक्स indemnity भी लेनी चाहिए. तो accordingly हमें depending on nature of transaction हमें अपने आप को कंजर्वेटिव प्ले करना चाहिए और उस तरह हमें डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग करना. अंडरटेकिंग लेते हैं हम, या उसका Sorry, पार्टी नितिन होना जी, जो आवाज हमारी डिक्लेरेशन है, जो हमारी अंडरटेकिंग है किसका, उसका पार्टी होना चाहिए जो हमारी डिक्लेरेशन ले रहे हैं, नो पी नो बिजनेस करेक्शन का जो पार्ट ले रहे हैं, उसी की मैं अंडरटेकिंग लेनी चाहिए. भाई टैक्स की रिकवरी होगी तो आपसे रिकवर कर लूंगा. बिल्कुल. हाँ, उसमें भी ले सकते हैं, अलग से भी ले सकते हैं, इंडेमनिटी दो उसमें भी ले सकते यहाँ पे मेरा ना थोड़ा सा इसमें व्यू चेंज है, व्हिच आई ऑलवेज बिलीव, जो मैं आपसे शेयर भी कर देता हूँ, कहीं गलत हो तो बता देना. मैं हमेशा इंडेमनिटी ना अलग से देता हूँ. व्हाई इट इज सो, जैसे गॉड साहब इज एडिशनल कमिश्नर, राइट, और मैंने सारे पेपर सबको दिखा. अब सर क्या बोलेंगे, नितिन तू तो रिकवर कर ही सकता है ना, क्यों ना मैं तेरे को 163 में एजेंट बना दूं, प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट. तो वो इंडेमनिटी पेपर इज नॉट मेंट फॉर एओ, इसलिए हम क्या करते हैं, वो पेपर अलग से दिखा रखते हैं. बाकी डिक्लेरेशन लेते हैं, नो पी नो बिजनेस करेक्शन का, और जो आप बेनिफिशियल ओनरशिप का जो डिक्लेरेशन आप कह रहे हो वो ले लिया, जो आपने पेपर बोले 2-3 चीजें जो ऐड कर दिया वो डाल दिया, टीआरसी ले दिया, और जो इंडेमनिटी वाली चीजें हम अलग से लेते हैं. अदरवाइज अगर मैंने व्हाट्सएप को दे दिया, व्हाट्सएप क्या भाई ठीक है टैक्स की लायबिलिटी बन रही है, ठीक है 201 में तेरे को दिक्कत नहीं है, क्यों ना तेरे को 163 में मैं एजेंट बना देता हूँ, तू तो मैं तेरे से रिकवर कर लूंगा, तू उससे रिकवर कर ही लेगा. तो दैट्स व्हाई मैं नॉर्मली उसका हाँ. पार्टी बनाता हूँ. नहीं, आपकी बात बिल्कुल लॉजिकल है, लेकिन मैं इसका एक प्रैक्टिकल रीजन देता हूँ. प्रैक्टिकल रीजन ये है कि जब हम फॉरेन पार्टी के साथ डील कर रहे होते हैं, तो वो एट टाइम्स वो अपने लेटर, क्योंकि ऑब्वियसली इस तरह की चीजें लेटर हेड पे ही होती है, वो एट टाइम्स अपने लेटर हेड पे इंडेमनिटी अलग से देने में थोड़ा प्रॉब्लम करती है. वो एक ही डॉक्यूमेंट में सब कुछ, क्योंकि एवरीथिंग इज रिलेटेड टू ईच अदर, वो एट टाइम्स उसमें प्रॉब्लम करती है. तो वो आई एग्री योर पॉइंट, उसको हमें केस टू केस बेसिस पे ऐसे करना चाहिए, और आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, प्रैक्टिकली चैलेंज आ सकता है. मान लो अगर मैं आप अगर मैं आपको इफ आई आस्क यू टू सम अप द थिंग्स कि जो हमने दो केस लॉ लिए कि इसका व्हाट आर द टेक अवेज, वो टेक अवेज बता दें, फिर तो उसके बाद फिर कंक्लूड कर लेते हैं. एक बार सेशन को व्हाट्सएप एक बार बोल देंगे, फिर व्हाट्सएप कर देंगे. व्हाट इज द टेक अवेज फॉर दोस केस लॉस, अगर आप डिस्कस कर लेना चाहें. हेलो निशांत भैया, टेक अवेज. निशांत जी. हाँ, मेरी आवाज आ रही है? मैं मुझे टेक अवे बोलने हैं. आप नहीं बोल रहे सर, टेक अवे तो आपकी है. हाँ, सॉरी. तो टेक अवे के लिए देखो, ये देखा जाए दोनों डिसीजंस टीडीएस से रिलेटेड ही हैं, और दोनों डिसीजन अनफेवरेबल है. जैसे टीडीएस, पहले डिसीजन में तो टीडीएस के लिए बहुत ही ज्यादा ओनरस लायबिलिटी डाल दी गई है, और वाइल डिसीजन काफी हद तक बहुत ही समरली वे में क्लोज किया गया है, जो सही नहीं है. बट स्टिल एज फार एज अ डिडक्टर हमें बिल्कुल कंजर्वेटिव प्ले करना चाहिए, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा. एट द एंड ऑफ द डे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, वी हैव टू ऑनर इट. इट इज द लॉ ऑफ द लैंड नाउ, so we have to honor it. We don't have any other option. So even practically हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, जो अभी तक ट्रीटी बेनिफिट लेके हम टीडीएस कम रेट पे काटते थे या नहीं काटते थे अंडर सेक्शन 194 एलडी या 196 डी, अब हम उन पे भी पूरे रेट पे टीडीएस काट रहे हैं, एंड वी आर आस्किंग देम टू विदहोल्ड टीडीएस, क्लेम द रिफंड. तो हमें ऑनर करना पड़ेगा. सेकेंडली, जो टाइगर ग्लोबल वाला डिसीजन है, उससे ये तो देखा जा सकता है कि अब रेवेन्यू अथॉरिटीज में बहुत ज्यादा रोबस्ट एक्सरसाइज करती है. अब वो बस चलता हुआ काम नहीं करती, रेवेन्यू अथॉरिटीज बहुत डीप में जाती हैं. अगर आप डिसीजन खोल के एक बार डिसीजन देखेंगे, इन्होंने इतने अच्छे से समझाया हुआ है क्यों सारे डिसीजन मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ले रहा था और क्यों मॉरिशस नहीं ले रहा था. वो एक्चुअली काबिल तारीफ है कि हमें भी वही काम करना पड़ेगा गोइंग फॉरवर्ड, और उल्टा उसे अच्छा करना पड़ेगा टू कमिट आउट डिसीजन. अब हम रेवेन्यू अथॉरिटीज को हल्के में इस हिसाब से नहीं ले सकते कि वो इसको चलने देने वाली अप्रोच करेंगी. देखा जाए पहले इतने फैक्चुअली इतने डिग आउट डिसीजन नहीं आते थे. अब कुछ टाइम से जहाँ पे रेवेन्यू अथॉरिटीज को लगता है कि नेगेटिव हो सकता है, वो पूरे दम लगा के वो काफी सारे फैक्चुअल एस्पेक्ट्स निकालती हैं. तो इसलिए हमें गोइंग फॉरवर्ड हमारी डॉक्यूमेंटेशन सबसे ज्यादा उस पर ध्यान देना पड़ेगा. हमारी डॉक्यूमेंटेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. जितने भी मिनट्स ऑफ द मीटिंग है और जितने भी हमारी ईमेल एक्सचेंजेस होती हैं विद आवर इंडियन कंपनी, फॉर मॉरिशस कंपनी, यूएस कंपनी, हमें ध्यान से देना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिकली हमने देखा है रेवेन्यू अथॉरिटी हमारे ऑफिस आके हमारी ईमेल की हार्ड ड्राइव भी ले जाके ईमेल्स वगैरह सब देखती हैं कि एक्चुअली ईमेल से क्या निकल रहा है. तो बहुत ही कॉग्निजेंट होने की जरूरत है, स्पेशली टीडीएस वाले मैटर्स में जहाँ पे स्टेक ज्यादा इन्वॉल्व है.
सब्सटेंस ओवर फॉर्म लगाने की जरूरत है, हमें बस लीगल कागज के बेसिस पे नहीं जाना चाहिए, सब्सटेंस ओवर फॉर्म लगाने की जरूरत। गौर साहब, let us conclude this. So थैंक्स अ लॉट निशांत जी, बहुत अच्छा डेलिब्रेशन आपने किया, और जो आपने कंक्लूड किया दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अभी क्या है कि जो 360 डिग्री जो हमारे डिपार्टमेंट ने कर दिया है, सबका डेटा कंसोलिडेट हो गया, उनके पास इंफॉर्मेशन है, टेक्निक ऑफ माउस है, तो फ्रैक्चर पोजीशन ये है कि दे आर विद मोर पीपल फ्री, दे आर स्टडीइंग, गिविंग मोर टाइम टू देयर थिंग्स, जो अभी तक नहीं होता था। अभी तक फाइल खोलते थे, असेसमेंट कर दिया है, 10 आदमी बेकार थे। आज फैक्चुअल पोजीशन ये है कि दे आर सप्रेस्ड विद द पीपल, so these people are taking care of such situation, they are doing research as a semi research kind of a thing, so our responsibility has really increased manifold. And as you rightly said, the decision regarding who has taken the decision, they have summed up very categorically. So that kind of a exercise has to be done by us. So thank you very much for being with us and disseminating such a nice information, deciphering the judgment. But certainly I would appreciate and say that the Supreme Court judgment which has come up in the Pilcom case, it has something and what can be done in future, because the onerous responsibility under section under chapter 17B are really very, I would say, I'm quite often I call 17B a dangerous act within the act. So, True. so thank you very much for being with us. Thanks a lot. My pleasure, Gaur Saab and Nitin ji. Thank you for giving me this opportunity. Looking forward for speaking in this platform again. Thank you. Thank you, Bhaiya. Thanks a lot, Bhaiya. Thank you, Bhaiya. Thank you to all the attendees. Thank you for making this session successful. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.